start with the very basics first, and then we'll go on to the mains answer writing of the same. Here we go. So as far as the topic of federalism is concerned, मेंस में हमें इससे क्या चाहिए पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं. फेडरलिज्म के टॉपिक के साथ दो तीन चीजें जुड़ी हैं. एक तो द वेरी बेसिक, द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट इट इज, ओके, एंड वेयर ऑल इज इट ऑपरेशनल, okay, and how it works in India. Then what are the issues involved in Indian federalism? These are the core aspects we have to think about. So when we say federalism, coming to the very basic, see, federalism is a system of government where you got two centers of power. One is, for example, the union government, and the second is the state governments. So dual government setup is the essential part. Apart from this, जैसे इंडिया में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, both of them should be independent in their own domain of functioning. Then how far this independence is there, तो ये हमेशा एक इशू रहता है, इसी के ऊपर ज्यादातर डिबेट भी होता है. ठीक है. Then apart from this, since we got a written constitution and that constitution has features for both the center government and the state government, so therefore we don't need a separate constitutional setup, although their areas of legislation, executive action, both are well defined. So areas of legislation and executive action are well defined. So this is the core of federalism. But then what is the ideology of federalism beyond this? जब भी स्टेट को फंक्शन करना है, तो स्टेट को फंक्शन करने के लिए अलग अलग लेवल्स ऑफ फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है. वो लेवल्स ऑफ फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे कैसे हैं इंडिया में? सो देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट, एंड देन देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन देयर इज local self-government. So today we got this three-tier model of federalism. Okay. First tier is the union, second is state, and third is the local self-government that comprises of basically the municipal corporations and the panchayati raj institutions. If you're talking about an urban center, so there are municipalities there. In rural areas, you've got panchayati raj. ये भी constitutionally settled है. जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, उसके थ्रू पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए और कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए गए इनफैक्ट. सो इन दिस थ्री टियर्स ऑफ फेडरलिज्म, हाउ दे ऑपरेट, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर supportive of each other in terms of governance, these are some of the considerations that we will be working upon. Now, one more thing before we go any further. So as far as the setup of governance is concerned, इसको हम एक स्केल के ऊपर रख सकते हैं. सबसे पहले एक सेटअप आता है यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस. यूनिटरी मॉडल के अंदर 100% पावर्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट के पास हैं, और स्टेट के पास कुछ खास पावर्स नहीं. So in this model, most of the power is concentrated at the top with the central government. Next is the federal government, where in the ideal setup, we say that both center and the state are equal in terms of power sharing. तो मैं ये यहाँ पे एक डोमेन लिख देता हूँ, पावर शेयरिंग. ओके. देन इससे भी एक नेक्स्ट डिग्री आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन. So in a confederation, the center has very less powers, while the state governments are much more powerful. इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आइडियल एग्जाम्पल्स तो नहीं है, वर्किंग एग्जाम्पल्स हैं. तो इंडिया इस एग्जाम्पल की कैटेगरी में फॉल करता है. यूएसए इज इन दिस कैटेगरी, एंड यूरोपियन यूनियन इज इन दिस कैटेगरी. ओके. So these are approximate examples, they are not exact examples, because we cannot have the ideal examples here. Okay. So this is the setup of the governance throughout the federal structure. Now, but within this federal structure,
हमारे पास बहुत तरह के अलग अलग मॉडल्स हैं जो काम करते हैं विद इन दिस फेडरल स्ट्रक्चर ऑल्सो। एक मॉडल तो काम करता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दूसरा मॉडल है ऑर्गेनिक फेडरलिज्म। तीसरा मॉडल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, ये तीन लेवल्स पे एक्चुअल में इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है। तो यहां पे लिखे इन इंडिया फेडरलिज्म ऑपरेट्स at three different levels. In India, federalism operates at three different levels: organic, competitive, and cooperative. Organic, competitive, and cooperative. अब ऑर्गेनिक फेडरलिज्म क्या होता है सबसे पहले तो लिखिए, ऑर्गेनिक फेडरलिज्म is where center leads and states follow. Very simple. जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी स्टेट्स को वही करना। सेंटर लीड्स एंड दी स्टेट्स फॉलो। तो जो भी प्लानिंग होगा, जो भी काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही करने वाले। दैट काइंड ऑफ अ फेडरलिज्म मॉडल इज देयर। So here hardly there is any kind of power sharing kind of an equation. It is just like a guidance role that is provided और सारे states center को follow करते हैं। Next is competitive federalism. Competitive federalism. So here states need to compete among themselves. States need to compete amongst themselves and with the center for benefits. Public funds और इन्वेस्टमेंट्स। तो हर चीज के लिए कंपटीशन है। इंडिया में ये वाला सिस्टम जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का है 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद देखने को मिलता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसा ही है। अब जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो स्टेट्स आप देखते हो ना जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो तेलंगाना का बहुत बड़ा एक 2 पेज का आर्टिकल आ रखा है, कभी कर्नाटका का आ रखा है, उसमें वो दिखाते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के अंदर, हम इस तरह से रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। सो वो सारी चीजें देने का मतलब क्या है, दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। पंजाब गवर्नमेंट भी बिग न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देती है जस्ट टू शोकेस दैट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। So from that perspective, there is a competitive federalism. It is not a part of basic structure in India. अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो है, कॉम्पिटिटिव नहीं, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक रियलिटी इन इंडिया पोस्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम एक स्ट्रक्चर पहले बना रहे हैं। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, come to the next one, cooperative federalism. So here the center and the states cooperate in larger public interest. Center and state cooperate in larger public interest. Okay, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके शोल्डर टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलते हैं। लेकिन इन सबके पीछे जो एक गोल है, what is the goal of federalism? If I ask you like this, these are all the types of federalism and the means of federalism, but what should be the goal of federalism? ये सब बनाने के पीछे, सेंटर स्टेट को अलग अलग करने के पीछे, what should be the goal of federalism? What do you think? Anybody? हाँ जी, please.
meet Governance? governance and aims and aspirations of the constitution. Okay. To ensure governance, good governance, fulfill the aims and aspirations of the constitution. Good. कोई और इसमें contribute करना चाहेगा? सर कि जो सेंटर है वो आर्बिट्रेरीली काम ना करे या कुछ सर क्या बोलते हैं उसको checks and balances रहे? सर बैलेंस ऑफ पावर हो कि सेंटर में भी और स्टेट में भी सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पावर ना हो. Fine. What else you can think of? बताओ. Anybody else? Shweta? Jashan? Sir, basically to unity in diversity, as well as the issues which require address of specific geographical address, जिन issues को चाहिए, and to maintain homogeneity as well as diversity in one place, there is a smooth transition of power. Federalism is required. Think very clearly. इतना कुछ नहीं है. 2-3 चीजों के ऊपर सोचना है. जब भी फेडरलिज्म की बात हो ना, तो फेडरलिज्म में क्या है, हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, जो कि एक सिंगुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, उसको अब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब वो पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट या कंपीट करके काम करेंगे. ठीक है. इंडिया की पूरी गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो सेंटर से चलाई जा सकती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. हर जगह पे अब जैसे यूनियन टेरिटरीज, सपोज सारे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बना दें, तो क्या वो चलेगा? नहीं, बढ़िया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Why we create this? Why we create a federal setup at all? What is the goal of this? तो इसके बारे में सोचना है. इसके पीछे 2-3 क्लियर गोल्स हैं. पहला गोल है रिप्रेजेंटेटिवनेस. हमने ये प्रोवाइड करनी है. अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट्स के लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिवनेस का एलिमेंट प्रोवाइड करना है इन दी गवर्नेंस सेटअप. उनको लगना चाहिए कि वो इंडिया के गवर्नेंस सेटअप के अंदर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेड हैं. ठीक है. दूसरा इसका कोर गोल है पार्टिसिपेटिवनेस. हमने गवर्नेंस को इंक्लूसिव रखना है, एक्सक्लूसिव नहीं रखना. हम ये चाहते हैं कि लोग अपने आप को गवर्न करें. ठीक है. इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है. पार्टिसिपेटिवनेस और यू कैन से इंक्लूसिव गवर्नेंस. The second reason why it is done. The third reason for having federalism at all is efficiency in governance. क्योंकि अगर एक ही पावर सेंटर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, it's very difficult. So you need to create multiple power centers to deal with multiple issues. For example, you have, let's say, one centralized PC and you're trying to run too many things on one centralized PC, it will be jammed, it will not work. If you get too many PCs working on too many things, then that's fine, that's efficient. वो अपना काम करने में चलते जाएंगे आगे. Fourth major thing or goal of federalism is specialization. See, every geography is unique. Every culture is unique. The people living in that particular geography area, their needs are unique. So from that perspective, फेडरलिज्म जितने टीयर्स बनते जाएंगे, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, राइट अप टू पंचायती राज, स्पेशलाइजेशन इज द वन यूनिक पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन विद फेडरलिज्म. जितना ज्यादा वो जो फेडरल यूनिट्स हैं एम्पावर्ड होंगे, उतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन ला पाएंगे. एक पंचायत को गांव की जरूरतों का ज्यादा पता है, उसको ज्यादा बेटर तरीके से डील कर सकती है एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी सिटिंग एट द सेंटर. उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना, एक यूनिक इकोसिस्टम को पहले स्टडी करना, फिर इतने सारे यूनिक इकोसिस्टम्स है, कितने स्टडी करेंगे, उनकी डिलीवरी कैसे करेंगे, becomes very difficult. So from that point of view, specialization is something that happens. So specialization in governance based upon the unique needs of each and every federal ecosystem. चाहे वो पंचायत है, विलेज है छोटा सा, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. अब चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है फ्रॉम लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. उधर इंडस्ट्रियल वेस्ट है लुधियाना के अंदर, चंडीगढ़ में सारी अर्बन वेस्ट है, मैनेजमेंट डिफरेंट होगी, लाइक दिस. सो स्पेशलाइजेशन इन गवर्नेंस. ओके. और बताओ, ऐसे सोचना है जब सोचना है.
See, essentially means आंसर राइटिंग है क्या? It's not a reproductive process. आप जो इंफॉर्मेशन किताबों में पढ़ लिया उसको आप बार बार अगर रिप्रोड्यूस करने तक ही सीमित रहोगे तो आप मीन्स आंसर राइटिंग में सक्षम नहीं बन पाओगे. रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सीमित है प्रीलिम्स तक. मीन्स इज इंटायरली अ क्रिएटिव प्रोसेस. यहाँ पे आपने किताबों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा. जो आपने पढ़ लिया दैट्स फाइन. अब आपने उस वोकैबुलरी को यूज करना सीखना है. ठीक है. और वो तब कर पाओगे जब अपने दिमाग को थोड़ा खुला छोड़ोगे, स्ट्रेस फ्री छोड़ोगे, तब क्रिएटिव प्रोसेस चलेगा. ओके. सो रिप्रेजेंटेटिवनेस, पार्टिसिपेटिवनेस, एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन. अब आप सबने मिलके मुझे एक पॉइंट देना है जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इन गोल ऑफ फेडरलिज्म. वो कौन देगा सबसे पहले? हाँ जी, सोनाली, व्हाट अबाउट यू? और क्या डाल सकते हैं इसके अंदर? A clear demarcation of government boundaries. That is subject. Division of powers. Division of powers. Sonali, please go ahead. Okay. Anybody else? Cheryl, would you want to contribute? Even I was thinking something on the lines of decentralization and division of power. Decentralization and division of power. Okay. See, as far as division of power is concerned, do you think it is a means of federalism or the goal? Sir, it's a means. It's a means. Division of power करके हम किसी चीज तक पहुंचना चाहते हैं, वो अपने आप में एंड नहीं है डिविजन ऑफ पावर. अरे एक चीज छोड़ी है मैंने, सोचो उसके बाद, दिमाग लड़ाओ. डेमोक्रेटाइजेशन. Can I not put this here? Hello. So, The rule of the people, grassroots level democracy. How can you ensure it unless and until you get federalism? So ये 5 basic goals of federalism हैं. ठीक है. Types of federalism आपने देख ली. बाकी चीजें मीन्स हैं, जैसे हम बोलते हैं डिविजन ऑफ पावर. अब मीन्स पे भी आ जाओ, चलो इधर. अब इस तरह से सोचना शुरू करो. What are the means of federalism? So you got division of power, definitely. एक क्लियर लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हमारे 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, जिसमें यूनियन लिस्ट अलग है, कंकरेंट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, सो दैट हर सब्जेक्ट ऑफ फेडरलिज्म अपने अपनी तरह से लेजिस्लेट हो रहा है, उसके ऊपर लॉज बन रही. सो डिविजन ऑफ पावर इज डेफिनेटली अ मीन्स ऑफ फेडरलिज्म. व्हाट एल्स इज द मीन्स ऑफ फेडरलिज्म? यू गॉट बजट एज अ मीन्स ऑफ फेडरलिज्म. सेंटर का बजट अलग है, स्टेट का अलग है. स्टेट बजट में से फिर पंचायती राज के लिए सैंक्शन होता है, सेंटर बजट में से स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ चीजें सैंक्शन की जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी, आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा जितने भी है. सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों लेवल पे इट इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ फेडरलिज्म. इन्हीं के थ्रू तो एक्चुअल में फेडरलिज्म काम कर रहा है. ठीक है. इसके अलावा सोच के बताओ जरा, एक और रह गया. हेलो हेलो. बहुत इंपॉर्टेंट एक और छोड़ा है मैंने अभी तक. क्विकली. जशन अभी लाइब्रेरी में बैठ के क्लास लगा रहा है, ज्यादा बोल नहीं पाएगा. ओके. तो Judiciary. no, democratic institutions like parliament, state legislature, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, जो इसके अंदर सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जाते हैं, वो सब भी मीन्स ऑफ फेडरलिज्म ही तो है. ठीक है. तो ये 4. जुडिशरी को मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा? जुडिशरी फेडरलिज्म को कंजर्व करने के लिए कुछ हद तक काम कर सकता है. जैसे अभी पीछे जीएसटी का अगर मुद्दा पड़े तो जुडिशरी ने टू एन एक्सटेंट फेडरलिज्म को कंजर्व करने की कोशिश की है by saying that ki states are independent of dealing with their own GST laws and they don't have to abide by whatever GST council says. They can make independent GST decisions on themselves. So as far as taxation is concerned, they are considered as equivalent.
ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था पिछले साल, तो उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जुडिशरी इज ऑल्सो मीन्स टू प्रमोट फेडरलिज्म, बट इट्स नॉट द मीन्स ऑफ इन फैक्ट वर्किंग ऑफ द फेडरलिज्म। तो ये कुछ 5 डायमेंशंस आपकी इस एंगल से मीन्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर बनती है। ये लिख लिया सब, गोल्स ऑफ फेडरलिज्म एंड मीन्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, कभी भी किसी टॉपिक के बारे में आप सोचते हो मीन्स के अंदर, तो उसमें सोचने के कुछ तरीके होते हैं। एनी टॉपिक that you want to think about, so one of those areas is like means ends. This is one way of thinking about any topic. जब भी अभी मैंने फेडरलिज्म के बारे में सोचा। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। This is another way to think of any kind of topic. तीसरा तरीका होता है किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने का या लिखने का, दैट इज डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, कल्चरल, इंटरनेशनल, कोई भी हो सकता है, रीजनल। ओके, देन एज ग्रुप बेस्ड, मे बी वुमेन, सेक्स बेस्ड। तो ये सारे अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी टॉपिक का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो यू थिंक ऑफ इट इन दिस 3 at least. Fourth way of thinking of or studying any topic is ideological. आपके पास कुछ सेट ऑफ आइडियोलॉजीज हैं, लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। अगर आप उनमें स्ट्रांग हो तो फिर उस तरीके से भी आप टॉपिक के बारे में डिबेट कर सकते हो। लाइक फेडरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कल हमने पढ़ा, इट्स एन आइडियोलॉजी। So that's another way of thinking about any topic, but these 3 are the most relevant for you, easier ones to deal with. ठीक है, अभी ऐसी फेडरलिज्म के बारे में अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोचना हो तो सोचा जा सकता है या नहीं? पहले तो देखो, बिकॉज मीन्स इज अ क्रिएटिव प्रोसेस ना, मुझे आपको चाबी किस लेवल पे देनी है कि क्या दिमाग चल रहा है क्रिएटिव प्रोसेस की तरफ या नहीं। सो नाउ इफ आई थिंक ऑफ फेडरलिज्म in the form of structural and functional aspects. So what are the structural aspects of federalism? फटाफट से बताओ। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का वेरी सिंपल, हमने अभी 3 tier ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा ना, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, दैट इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, फिनिश। ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट कौन सा है? जो आपने अभी गोल्स देखे वो फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, दैट आर द डिलीवरी पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन थिंक ऑफ इट वेरी इजीली। इसी तरह से डायमेंशनल लेवल पे सोचना शुरू करोगे तो ये सारी डायमेंशंस 3 tier वाली कौन से एरिया में फिट हो जाएंगी? पॉलिटिकल। और गोल्स आपके फिट हो जाएंगे इन द टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, दिस वे धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ एक फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग अपने दिमाग में सेट करके रखना है। उस फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग के बेसिस पे धीरे धीरे आप चीजों को एनालाइज करते हुए लिखते जाओगे। इसकी प्रैक्टिस ही करना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कीपिंग एट आवर हार्ट। ओके, चलो अब जो मैंने आपको हैंडआउट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर जरा चलते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। गिव मी अ मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंडियन पॉलिटी वाला जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन आंसर्स वाला। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट आई एम डीलिंग विद। So Indian federalism. So as enshrined in the constitution, it outlines the distribution of power between the central government and state government. So that is federalism. So while the federal structure, structure functional analysis, so while the federal structure has been instrumental in maintaining the unity and diversity of the country, there are several critical issues that have arisen in the implementation and functioning of federalism. Here are some of them. So till date, what are the issues in terms of federalism? First issue is centralization of power. See, in federal government, we want to provide some kind of identification,
or some kind of what you can say legitimization to the state government and the local self government also. But in India, उनकी अपनी पहचान अभी तक स्थापित ढंग तरीके से हो ही नहीं रही, उतने केपेबल ही नहीं बन पा रहे. So one of the major challenges in Indian federalism is the perceived centralization of power in central government. Over the years, there has been instances where the central government has encroached upon the powers of the states. Time to time, state emergency लगाते, leading to concerns about erosion of state autonomy and federal spirit. इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल क्या है और ये कैसे इवॉल्व करता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहता हूँ. 1947 से लेके 1977 तक इंडिया में वन पार्टी गवर्नमेंट रहा है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस. द रीजन फॉर दैट वाज जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे पायनियर्स थे, लीडर्स थे, वो सब अभी गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट एंड पार्सल थे राइट अप टू नेहरूज डेथ इन 1964. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री टिल 1965 ही वाज द प्राइम मिनिस्टर. उनकी डेथ के बाद एक वैक्यूम आता है इंडियन पॉलिटिकल सीन के ऊपर, एंड देन दैट वैक्यूम इज टू एन एक्सटेंट नॉट एज मच फिल्ड बाय इंदिरा गांधी. फुल नेम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी. So she tries, but she's not able to keep up to the mark. Why? Because उनको अभी सब बहुत छोटा बच्चा जैसे मानते हैं. ये कहाँ से आ गई गवर्नेंस करने, क्योंकि बाकी सब बाबे बैठे हैं अभी पार्लियामेंट में, को लगता है कि इसको चांस मिल गया, हमें नहीं मिला. लाइक दिस दे आर नॉट लेटिंग हर गेट एस्टैब्लिश्ड वेल. बट देन somehow she completes her first term and then she is coming up for the second term. But then she gets her chance to get established. That is the 1971 war, India-Bangladesh war. Thereafter, she is well established as a leader. लेकिन 1975 में जब इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया जो इंदिरा गांधी की इलेक्शन हुआ वो ठीक नहीं हुआ. So there is a particular writ jurisdiction in the fundamental rights in the Constitution, Article 32, that talks of quo warranto. Quo warranto says, by what authority are you holding this office? आप किस लहजे से, किस अथॉरिटी से ये ऑफिस अपने पास रखा है. तो ये quo warranto का नोटिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उस टाइम पे इशू किया, इंदिरा गांधी के, और उनको उस चक्कर में अपनी सीट छोड़नी पड़नी थी, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई 1975 से लेके 77 तक. इट वाज एन 18 months emergency. Because of that emergency, there was a change in the government also, because when the elections happened after emergency, then from 1977 to somewhere 79, Janata Party government came into being. और स्टेट्स के अंदर भी धीरे धीरे अब अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट आनी शुरू हो गई. सेंटर में भी चेंज हो गया, स्टेट्स में भी चेंज. इसके बाद 1980 में दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज की सरकारें थी, तो उनसे डील करने के लिए बाय द फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज प्रोवाइडेड, उन्होंने स्टेट में इमरजेंसीज लगानी शुरू की. फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल. उसकी एक प्रोविजनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अब उस प्रोविजन को मिसयूज करते हुए बार बार स्टेट इमरजेंसी लगाई. पंजाब उसमें से शाइनिंग एग्जांपल है, क्योंकि सबसे ज्यादा इमरजेंसी पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लगी. मेजर स्टेट्स में से पंजाब एक शाइनिंग एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे अकालीज होते थे ज्यादातर गवर्नमेंट में, तो सेंटर में कांग्रेस होती थी, नहीं बनती थी आपस में. अब इसके चलते देयर वाज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट. Second way for the central government to encroach upon the power of state is one of the recent examples, farm laws. 3 farm laws एक तरह से सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर थोपे गए. एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो एक स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अंदर, आप लोग पढ़ोगे. So since it's a state subject, that means state government should make laws on agriculture. But at the same time, commerce is a union subject. So that means agricultural commerce also, buying and selling of things. उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. तो लॉ तो एग्रीकल्चर के ऊपर बन रही है, लेकिन प्रिटेक्स्ट कॉमर्स का यूज हो रहा है. उस प्रिटेक्स्ट को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए, जिसके बेसिस पे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता था स्टेट के लेवल पे. बट एट द सेम टाइम फार्म प्रोटेस्ट हुए, फार्मर प्रोटेस्ट पूरा 1 साल चला, उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा. सो ये सब एक तरह से फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट भी जाता है. ओके,
अभी जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2019 में J&K was converted from a state to union territory. Imagine. इससे बुरा किसी भी स्टेट या किसी भी फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी के लिए क्या होगा कि फ्रॉम अ स्टेट इट बिकम अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी की सारी गवर्नेंस, कंट्रोल, एवरीथिंग इज विद द सेंटर। स्टेट अपने आप में टू एन एक्सटेंट इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है। इसको डिसॉल्व किया गया पहले इनकी असेंबली को, फिर उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के चलते ही इसको स्टेट से यूटी में कन्वर्ट भी कर दिया गया। और ये सारी पावर डोमेन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है, ऐसा नहीं है कि प्रोवाइडेड नहीं है, बट ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में यूज करने वाले स्टेप्स थे जो कि किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम आज भी सेंटर के द्वारा। तो आज अब J&K के यूटी बनने के बाद बहुत सारे स्टेट्स के दिमाग में एक डर तो पक्का है, पंजाब फॉर एग्जाम्पल, कि कल को अगर ज्यादा शोर मचाएंगे यूटी हम भी बन सकते हैं। और स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज कर पाए इस चीज पर कि हमें यूटी क्यों बनाया गया। इनफैक्ट लोग तो खुश होंगे अगर वो यूटी बन जाए। क्यों? चंडीगढ़ में लोग खुश है ना, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, most of the laws are from the center directly, the entire administration is centralized, the taxes are centralized, so most of the things will be cheaper here as compared to Punjab, for example fuel. Yes, so all these things will be good for the people but bad for the federalism. So it's like this. So this is one thing, centralization of power, which is very much dominant in India. It's a everyday thing and it's happening everywhere, whether you look at the financial domain, whether you look at the political domain, this is very much there. So iske aur aspects ko aage jaake padhenge. Then the financial imbalance. So there is an ongoing issue with the fiscal imbalance between the central government and the states. So central government has greater financial resources and control over revenue collection, while states, they rely heavily on central grants. So this imbalance affects the financial independence of states and their capacity for effective governance also. Next are interstate disputes. So interstate disputes like Punjab, Haryana, they are fighting over SYL, Satluj Yamuna link canal. तो आमतौर पे शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, वाटर या टेरिटोरियल बाउंड्रीज, इनको लेके डिस्प्यूट्स रहते हैं। अब इन सारे डिस्प्यूट्स की जो रेजोल्यूशन आती है, इट ऑफन रिक्वायर्स द इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द जुडिशरी टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे केसेस में भी सेंटर का जो हाथ है वो ऊपर हो जाता है पावर स्ट्रक्चर में, इट बिकम्स अ हायर पावर स्ट्रक्चर। एंड लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, अब 7th शेड्यूल, जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की, फार्म लॉस की बात की, तो ऑलरेडी उसमें एक सेंटर और स्टेट लिस्ट तो है, बट एक कंकरेंट लिस्ट भी है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों सेंटर और स्टेट, आपको पता है, लॉ बना सकते हैं, बट द ट्रबल इज कि अगर एक ही सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बनाए तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज भी बन जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हमने अभी देखा कि ऑल्दो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट एग्रीकल्चरल कॉमर्स फॉल्स इन सेंटर्स डोमेन। So the central government, if it wants, can encroach upon the policy domain of the state. Moreover, जब स्टेट इमरजेंसी लगी होती है तो उस टाइम पे उसके लिए जो लॉज बनाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। तो स्टेट लिस्ट बिकम्स concurrent list to an extent. Okay. Then unequal development. So Indian federalism has struggled to address regional disparities and ensure disparities or equitable development across the states. आप अगर इंडिया का एक एग्जांपल लोगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स वर्सेस सदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स वर्सेस ईस्टर्न स्टेट्स, इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो पहले तो आपको वेस्ट वर्सेस ईस्ट क्लियर डिवाइड नजर आएगा। इधर आप एग्जांपल लीजिए ओडिशा, झारखंड, बिहार, इन स्टेट्स की डेवलपमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं हो रखी, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट में गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी टू एन एक्सटेंट बहुत से डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली दे आर फार वेल ऑफ। नॉर्थ में भी आप देखिए स्टेट्स, दे आर वेल ऑफ इन यूपी, इन J&K, इन हिमाचल, comparatively better as compared to South, Kerala, Tamil Nadu, not doing as well. So there is a clear divide. Beyond this, ये तो चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अगर हम
डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी बात करें तो हरियाणा में फॉर एग्जांपल दी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आर लीस्ट डेवलप्ड, बट व्हाइल दोज हैविंग क्लोज बॉर्डर्स विद दिल्ली एनसीटी इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, तो दे आर वेल डेवलप्ड। तो ये रीजनल लेवल पे इक्विटेबल डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे। तो किसी न किसी लेवल पे या तो सेंटर से स्टेट या स्टेट से लोकल ठीक तरह से फेडरलिज्म प्रिवेल नहीं कर रहा, इस वजह से ऐसा है। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है लेजिस्लेटिव, जो हमने लॉज के एंगल से देखा। दूसरा है फाइनेंशियल, और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। 3 various domains are there. As far as laws are concerned, center has an upper hand. Even if a state law is passed, governor, by the virtue of Article 200 in the Constitution, can reserve any bill passed by the state legislature for the due consideration of the president, except for money bill. कोई भी बिल वो अपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाना चाहती है, उसको रोक के प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है। और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन कहने का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लेते हैं। देन फाइनेंशियल, तो इसमें हमने बात ही किया अभी कि स्टेट्स जो हैं वो अपने फाइनेंसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल द आईएएस एंड द आईपीएस, इंक्लूडिंग द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज नाउ, they all operate on the basis of directions provided by the central government, while their area of operations is in the state government. अब इसकी वजह से सारे का सारा स्टेट का जितना भी मशीनरी है उसको वो कंट्रोल तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी रिपोर्टिंग कहाँ है? सिर्फ सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई खास रिपोर्टिंग या इश्यूज नहीं है, उनको डर के काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कमांडिंग हाइट किसकी है? सेंटर की है। फिर सेंटर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 263 कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो उनको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ऐसा चलते हुए सेंटर अगेन हैज अ क्लियर अपर हैंड। इसीलिए बोलते हैं ना, इंडिया हैज अ क्वाजी फेडरल सेटअप, या और इट्स अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी सेटअप। तो इस तरह से बोलने का कारण सिर्फ इतना सही है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल इन इंडिया। Okay. Then need for cooperative federalism. So the concept of cooperative federalism, which emphasizes upon collaboration and coordination between the center and the state, has been an ongoing challenge. While the efforts have been made to promote cooperative federalism through forms like interstate council, GST council, more proactive measures are required to enhance the cooperation and address the concerns of the states. So these are some of the critical issues that are there with respect to federalism in India. तो सीधा क्वेश्चन एक आपको यही आ सकता है, तो डिस्कस द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म इन इंडिया और व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ओके, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस केम इन यूपीएससी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर and the challenges faced by the center and the states in tackling the crisis. Discuss the measures taken by the government to strengthen intergovernmental coordination during the pandemic. ये यूपीएससी का क्वेश्चन। तो पैंडेमिक के चलते फेडरल स्ट्रक्चर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या चैलेंजेस आए, उसको कैसे बेटर किया गया, ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन में बात करनी है। Now when it is analyzed, the directive is analyzed. How do you analyze anything? Anybody? हमने साथ साथ में थोड़ा सा डायरेक्टिव्स पे भी काम करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन डायरेक्टिव्स की समझ फिर भी लिमिटेड होती है। सो व्हाट इज एनालाइज? हाउ डू यू एनालाइज एनी टॉपिक? हेलो हेलो। उसके उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स एस्पेक्ट्स दोनों को अगर हम स्टडी करें, मे बी दैट इज एनालिसिस। No, that's not analysis. Anybody else? Session? Cheryl, how do you analyze a topic? When it is said, analyze this,
analyze the relationship between center and states, for example? Cheryl, am I audible? Yes, sir. I think I don't know the answer to your question. How do you analyze anything? Very simple question. इतनी साल आप आंसर्स लिखते हो ग्रेजुएशन के अंदर, उधर हर जगह पूछते ना एनालाइज, Sir, क्रिटिकली एग्जामिन. sir, but बस like पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डिस्कस करके उसका एक कंक्लूजन सा निकालना कि क्या किस साइड को. नहीं, yes, प्रोज sir, एंड कॉन्स नहीं डिस्कस करने होते. sir, The but different और कुछ? parameters, हाँ, श्वेता, go ahead. you know, the everything doesn't. different parameters like you said, center-state relations, how to analyze. So we will be analyzing the administrative relations, Okay, legislative very good, relations. very good, very good. Yes. So basically, See, by seeing every aspect of a topic and then like drawing a conclusion. correct. So you have to have some aspects, no? सिर्फ pros and cons तो analysis नहीं है. Okay. So let's see, how do you go for an analysis? So there are generally, when you do an analysis, there are two ways to do an analysis. अपने पास नोट करो. कभी भी किसी चीज का एनालिसिस करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ए थ्योरेटिकल एनालिसिस. ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए डायमेंशनल एनालिसिस. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए फैक्चुअल एनालिसिस. ठीक है, थ्योरेटिकल एनालिसिस में हम थ्योरी के लेवल पे चीजों को कंपेयर करते हैं. लेट्स से फेडरलिज्म का थ्योरेटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे तो एज अ कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म क्या है और एज अ रियलिटी इंडिया में क्या नजर आता है. Then that is a theoretical analysis. Dimensional analysis means, let's say federalism is operating for certain goals. हमने goals of federalism पढ़ लिया. Or it has certain means. Or it is supposed to work on social, political, economic or various ways. उन dimensions में रख के हम उसको analyze करते हैं कि भाई चाहिए ये था और हो क्या रहा है. Factual analysis is where you give examples. These are the facts with respect to federalism in India. Do these facts, or what kind of pictures do these facts present? So that is a factual analysis. So generally in UPSC, when you do an analysis, we do a mixture of all this, combination, everything. क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सोचने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमारे पास वहां पे आंसर लिखने का टाइम मिलेगा हमें 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट एक आंसर लिखने का टाइम मिलेगा. उसके अंदर 250 वर्ड लिखना है, तो इतना दिमाग चलाने का उस टाइम पे टाइम मिलेगा या नहीं मालूम नहीं. बट एटलीस्ट एक बेसिक सिंपल सा मैकेनिज्म दिमाग में होना चाहिए कि मुझे थोड़ा थ्योरी, थोड़ा डायमेंशंस और थोड़े फैक्ट्स डाल के एनालिसिस करना. ये 3 चीजें आपके एनालिसिस में होनी चाहिए. अब अगर यहां पे मैं एक चीज लिख दूं, क्रिटिकली एनालाइज, इसमें और एनालाइज में क्या फर्क होता है? एनीबडी? What is the difference between analyze and critically analyze? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, anybody can go on. What is the difference between analyze and critically analyze? हाँ, please Sonali. सर उसमें भी है उनकी रीजन होते कि जो भी हम आस्पेक्ट लेंगे उसके रीजन के एग्जांपल्स भी देंगे साथ में. Not examples. See, when we anybody else would like to try before I say? हाँ, Shweta. So we have to show the both sides, like positive, negative, pros, cons, No. like that. No. We need to give reasons. If there is a certain analysis that you have reached, a certain conclusion you have reached based upon your analysis, now why is that particular situation there? अगर उसका reason भी साथ में देंगे, then that becomes critically analyzed. Let's say in India, it's a quasi-federal setup. Now, for this quasi-federal setup, I have given a theoretical, dimensional, and factual analysis. Now, in each of them, if I also state the reasons, why is it so in India? Then that becomes a critical analysis. What the idea? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So if you also have to give your justification, then it is a critical analysis. If
आई एम जस्ट टू गिव द एनालिसिस, फिर उसमें मैं ये चीजें बता के छोड़ दूंगा, थ्योरेटिकल, डायमेंशनल और फैक्चुअल, मैं जस्टिफिकेशंस नहीं दूंगा. सो दिस इज कॉल्ड a compound directive, critically analyze. Simple directive is analyze. Okay. कई बार ये कहते हैं, एक स्टेटमेंट बना देते हैं, एनालाइज दिस, फिर एंड में लिख देते हैं जस्टिफाई. ये एनालाइज भी करना है, जस्टिफाई भी करना है, तो ये क्या बन गया? ऑटोमेटिकली क्रिटिकली एनालाइज. और ये बोलते हैं एनालाइज दिस एंड गिव एग्जांपल्स, तो वो क्या बन गया कि भाई फैक्चुअल एनालिसिस भी देना साथ, सिर्फ थ्योरेटिकल और डायमेंशनल पे फोकस नहीं करना. और एनालाइज जैसा ही एक और टर्म यूज करते हैं यूपीएससी, दैट इज एग्जामिन, है ना? So if it is analyze and examine, what is the difference between the two? What is the difference between analysis and an examination? You all given examination throughout your life? अब बताओ, analysis और examination के बीच में क्या फर्क होता है? एग्जामिनेशन The में more क्वेश्चन on One by one, one by one. Okay. Who wants to go first? Param, go first. सर एग्जामिनेशन में मे बी एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड उसको हम एनालाइज करते हैं सर. Aspect को analyze करते हैं? नहीं. Who else want to go for it? the more on the theoretical side. No. Sir, I think they're pretty much Hmm. similar. It's just that examination is more factual usually. I don't know, I'm To assuming. an extent, examination is factual. That's there. Okay. आपकी ब्लड रिपोर्ट एग्जामिनेशन के लिए गई, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपके एक्सेट्रा पैरामीटर्स हैं और उनके कुछ फिगर्स दिए गए. अब इसकी एग्जामिनेशन जब डॉक्टर करेगा तो वो ये दिखेगा कि भाई नॉर्मल रेंज क्या थी और आपकी क्या आ रही है. एट दिस पॉइंट ही इज एग्जामिनिंग योर ब्लड रिपोर्ट. यस, but that examination is possible on the basis of certain parameters, an ideal range, and what is the achievement in that blood report, what are the results of the blood report. Yes, this is the way examination has been done with you also since your class 1. अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपने एग्जाम्स दिए, एक मैक्सिमम मार्क्स थे और एक आपका स्कोर था. In that examination finally a report came, that was your report card. Yes, and how you fared in the examination. Yes or no? This has been happening throughout your life. So, isn't it really different from analysis? Yes, it is very different. So, in examination, whenever you examine anything, first and foremost requirement is to create certain parameters based upon which you will examine. Then those parameters needs to have an ideal range or maximum or a minimum. Then between that minimum and maximum, what is the achievement so far? That is an examination. And if it is now critically examined, then across that achievement, you have to also put a reason कि ये इतना ही क्यों पहुंचा और आगे क्यों नहीं गया, या यहाँ तक के ये पर्टिकुलर रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या है. कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है और आगे उसको क्या करना चाहिए. समझ आ गया? What is examine and what is critically examine. For example, examine the Human Development Report of India 2023 in context of poverty alleviation. तो आपके पास क्लियर पैरामीटर्स हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया. इन 3 बेसिस पैरामीटर के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है. उसके आपके पास फिगर्स हैं, अचीवमेंट्स हैं इंडिया के. फिर आप देखते हो कि भाई इन सब का पॉवर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. So far so good. Now it is clear what is the distinction between analysis and examination. Yes or no? Yes. अप्लाई जब करोगे तब करोगे, बेसिक समझ आ गया ना. कैरल, परम? Yes, sir. यस, ठीक है, गुड.
Now let's move. सर एक इशू है सर, एनालाइज में जी सपोज बोलिए। एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके अगर बताएंगे सर, बिकॉज अभी तक मैं कुछ भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, मतलब ये एनालाइज का एग्जांपल पहले ले रहा हूं मैं। सर ठीक है, सो इट सेज एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेंटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, डिस्कस। अब नाउ डिस्कस इज एन ओपन एंडेड डायरेक्टिव, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब डायरेक्टिव्स की बात हो ही रही है तो see like we are right now in a discussion, so discussion is an open ended directive, जैसे मर्जी काम करो आप, लेकिन इसमें दो चीजें जरूरी हैं कि discussion should have a ending, a fair conclusion of a discussion, ताकि पता चल जाए कि भाई डिस्कशन खत्म हो गई। ये डिस्कशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कहीं से शुरू हो गया, कोई सिस्टमैटिक नहीं है, फ्लो होना चाहिए उसका, ताकि समझने वाले को, सुनने वाले को पता चले कि डिस्कशन हुई है। ठीक है, द डिस्कशन शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, तो मैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ आया, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन, ये तीन चीजें डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो दो क्वेश्चंस हैं एसेंशियली, एक क्वेश्चन नहीं है। फाइन, अब इसका आंसर कैसे बनेगा देखो। The COVID-19 pandemic has a significant impact on India's federal structure, affecting the balance of power between the central government and the states. The challenges faced by the center and the states in tackling the crisis have been numerous and have been varied in severity across the different regions of the country. So that is the impact. Then, so impact of pandemic on the federal structure of India. Be very clear. This is what is asked. ये पूछ रहे हैं ना? Analyze the impact of pandemic on the India's federal structure. ये पूछा है, यही बताना। So one of the most significant impacts of the pandemic on India's federal structure has been on the increased role of central government in policy making and decision making. The central government has been responsible for coordinating the national response to the pandemic, including the distribution of essential medical supplies, vaccines, and financial aid. This has led to some tensions between the center and the states, as some states have felt that the central government has not done enough to support them in their efforts to combat the pandemic. So that is one. Second, the pandemic has also highlighted the existing inequalities between the different regions of the country, particularly in terms of access to healthcare and economic opportunities. Some states have been better equipped to handle the pandemic than the others, due to factors such as higher levels of investment in healthcare infrastructure, more diversified economies, and better governance. This has led to disparities in the level of support provided by the central government, while some states receiving more assistance than the others. Another impact of pandemic on the federal structure has been increased decentralization of decision making and governance. The states have had to take on greater responsibility for managing the pandemic within their own borders, including implementing lockdowns, managing healthcare systems, and distributing vaccines. This has been a significant challenge for some states, particularly those with weaker healthcare infrastructure or limited financial resources. So, तीन basic impacts on India's federal structure and their analysis has been provided. How I have provided it, I have used dimensional and factual areas for this analysis. क्योंकि ये मेरे से theoretical analysis मांग ही नहीं रहा। इस क्वेश्चन का एक बड़ा लिमिटेड सा कॉन्टेक्स्ट है पैंडेमिक, और उस पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके ऊपर हमने बात करनी है, ना कि इन जनरल। तो इसलिए मैं डायमेंशनल और फैक्चुअल लेवल पे अपना एनालिसिस सीमित रखूंगा। ठीक है, देन the Indian government has taken several measures to strengthen intergovernmental coordination during COVID-19 pandemic. Some of the key measures are, यही पूछा था, the challenges faced by the center and the states in tackling the crisis, and discuss the measures taken by the government to strengthen the intergovernmental coordination during the pandemic. तो ये challenges faced और impact on federal structure तो एक ही पॉइंट में इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, किसको क्या चैलेंज है और क्या इम्पैक्ट था। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, तो क्या क्या मेजर्स लिए गए। फर्स्ट इज एनडीएमए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इन्वोक्ड
by the central government to coordinate countries' response to pandemic. This act empowers the NDMA to take measures for the preventions of the spread of COVID-19. Then formation of an empowered group. So central government ne banaya empowered group of ministers. So this was to coordinate with the UTs and states in various areas such as medical infrastructure, logistics, information management. The rumors was spread करते हैं. Regular video conferencing. The Prime Minister of India regularly conducted video conferences with chief ministers of all states and UTs to discuss pandemic situation. Almost weekly meetings, daily meetings, सब चल रहा था online. So this allowed the central government to understand the challenges faced by the states and provide them with necessary support. So ये federal level पे भी coordination है और general level पे भी एक measure है. Then financial assistance. The central government provided financial assistance to the states under the SDRF, State Disaster Response Fund, and NDRF, National Disaster Response Fund. So the government also announced the economic package of rupees 20 lakh crore to provide relief to different sectors affected by the pandemic. Atmanirbhar Bharat Abhiyan के तहत ये particular package announced किया गया था 2020 में. Then interstate movement of goods and people. The central government coordinated the interstate movement of essential goods and people during the pandemic. So they issued SOPs, standard operating procedures, and guidelines for movement of goods and people across different states. Then vaccine distribution. Central government has been coordinating the distribution of vaccine across the country even till date. The government created a digital platform called CoWIN to register and schedule the vaccination appointments. Vaccines were distributed to the states based on their population and the number of healthcare workers and frontline workers. 3 levels पे vaccines की distribution हुई थी. Population, healthcare worker, frontline worker, like this. तो ये इतना लिखने के बाद 250 वर्ड्स में और कोई जगह बचेगी नहीं. तो हमने 2 एस्पेक्ट्स को जस्टिफाई करना था. पहला, कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर और उसके क्या चैलेंजेस रहे सेंटर स्टेट के अंदर. दूसरा, डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन. जो मेजर्स हमने डिस्कस किए वो हमने डायमेंशनली डिस्कस कर लिए, तो हमारा काम चल गया. एंड नेक्स्ट इज द कंक्लूजन. So every discussion has to have a conclusion. So same as here. The pandemic has posed challenges for both center and state in India, with the need for national coordination and state autonomy being a balancing act. मुझे फेडरल के साथ भी इसको जोड़ना है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ डाली. The government has taken measures to strengthen intergovernmental coordination, but there is still room for improvement. Strengthening the federal structure and addressing existing inequalities are crucial for building a resilient and equitable society. So that's the future vision. हमेशा आंसर में अगर आप कंक्लूजन जो है उसमें कुछ थोड़ा फ्यूचर एस्पेक्ट दे पाओ तो बहुत अच्छा है, और तो वो फ्यूचर एस्पेक्ट जो भी दोगे उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट देना भी जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत उसको पेसिमिस्टिक ओरिएंटेशन में छोड़ दो, वो गलत हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज असेस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन मेंटेनिंग फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया. डू यू एग्री दैट इट शुड बी गिवन अ परमानेंट स्टेटस? तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर फाइनेंस कमीशन जो है अगले 5 साल के लिए रिकमेंडेशंस देके जाता है ऑन द डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस और शेयरेबल टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. दिस इज द वन बेसिक थिंग ऑन विच इट गिव्स रिकमेंडेशन. और भी हैं 2-3, बट ये कोर होता है. जो शेयरेबल प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो कितने परसेंट शेयर किया जाएगा, दैट इज द वर्टिकल शेयरिंग, और किस तरह से स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाएगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग. तो सेंटर से स्टेट एंड विद इन स्टेट्स. ओके, 2 लेवल पे ये काम होता है. So now as far as the rule is concerned, that is the core area. Now if you are asked to assess the role, what does this mean? So assessment is very similar to examination. है ना? आपकी एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आती थी, तो यहाँ पे भी वही है. आपने कुछ एक पैरामीटर्स रखने हैं कि भाई एक अच्छे फिस्कल फेडरलिज्म के लिए बेसिकली ये होना चाहिए कि स्टेट की अपनी रिसोर्सेज इंडिपेंडेंट है, ऑब्वियसली उसके पास सफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज है एज पर उसके जो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ये कुछ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फिर थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म के लिए जैसे पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके लिए भी सफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए.
तो वो एवेन्यूज क्रिएट करना फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ as far as it should be given a permanent status or not, परमानेंट स्टेटस होने से फर्क क्या पड़ता है? अभी 5 साल में एक बार आता है और 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देके चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी की जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर अवेलेबल फ्रॉम 2021 टू 2026. तो मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने अगले 5 साल का प्लान बताओ वर्सेस मैं आपको ये कहूं कि आप आज का प्लान बताओ, तो आप कौन सा प्लान मुझे बेटर बता पाओगे? ऑब्वियस है आज का. 5 ईयर वाला प्लान होगा तो सही, लेकिन उसमें से कितना एक्चुअल में मैच्योर करेगा इवन यू डोंट नो. कोविड-19 आने से पहले 2019 के बजट के अंदर निर्मला सीतारमन said that India's GDP will grow at a pace of 10% per annum. And when the COVID-19 hit, we actually went minus 10%. Almost. है ना? प्लस 10% जाते हैं. तो फिर सबने मजाक करना शुरू कर दिया, सर मैम आपने बजट की स्पीच में सही बोला था, बस माइनस डालना भूल गए. तो प्लानिंग तो हम 1 साल की आगे भी नहीं दे सकते अगर ध्यान से देखा जाए तो. व्हाट आई मीन टू से इज दिस, nobody could predict COVID-19 pandemic. Nobody could predict the 2008 financial meltdown that happened in the US market, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज में डोमिनो इफेक्ट आया. So economics is something nobody can predict. Today it is in a certain way, and the next week it may start tumbling down in a certain way because of the globalization, because we are so interconnected. Today, if Russia decides to go nuclear in the Ukraine war, and it's tomorrow's headline, a lot of things are going to change at the economic level. फिर हम जो आज रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, शायद हमारे को उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाए. ऐसा ना? तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी बदलती हैं, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म प्लान करना मुश्किल है. इसलिए अगर एक परमानेंट बॉडी होगी तो वो रोज डिसीजन मेकिंग दे सकती है. हर महीने का जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आता है आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट के पास भी टैक्स रेवेन्यू हर महीने आ जाता है. उसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी जैसे हर 2 महीने में एक बार आती है, उसी तरह से ये भी 2 महीने के बाद आपको फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन आ सकते हैं. अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए शेयरिंग इस तरह से होगी, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए शेयरिंग इस तरह से होगी. दैट इज मच मोर वायबल इफ यू क्रिएट अ परमानेंट स्ट्रक्चर. आई होप द अंडरस्टैंडिंग इज देयर नाउ. लेट्स सी द आंसर. The Finance Commission is a constitutionally mandated body that is at the center of fiscal federalism. Set up under Article 280 of the Constitution, its core responsibility is to evaluate the state of finances of the union and the state governments, recommend of the sharings of the taxes between them, and lay down the principles determining the distribution of taxes among the states. ये 3 बेसिक काम होते हैं इसके, कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 280 में लिखे हैं, तो वही हमने यहाँ पे बता दिया. बताने जरूरी भी है, अगर आप इनको स्किप करेंगे तो नंबर भी स्किप हो जाएंगे. Its working is characterized by extensive and intensive consultations with all levels of government, thus strengthening the principle of cooperative federalism. तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशंस के थ्रू ही अपना काम करता है, इस वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए अच्छा है. Its recommendations are also geared towards improving the quality of public spending and promoting fiscal stability. तो ये 2 चीजें और हैं जो इसके वाइडर पर्सपेक्टिव में आती हैं. Now, since the question is assess the role of Finance Commission in maintaining fiscal federalism in India, so the key word here is maintaining. Is it different from improving? Is the word maintaining different from improving? Hello. Yes, sir. Yes. How is it different? So improving means making something better, and maintaining means maintaining it at the same level so that it doesn't degrade. Correct. So maintenance is more concerned with sustainability of a system. Improving is more concerned with the reform of the system. So right now, the concern of the first statement is with respect to sustaining the system. जैसा है वैसा ही रहे, बस चलता रहे. The concern of the second statement altogether different है. Do you agree that it should be given a permanent status? So giving it a permanent status is looking at the reform part, while maintaining is looking at the status quo part कि उसी को ढंग से चला लो जो है. ठीक है.
तो 2 लेवल्स पे काम करना है। ओके, अब देखिए, सो फाइनेंस कमीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग, आपने इस वर्ड को ऑल्टर नहीं करना, द फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस। उसके कुछ काम है, वो अगर वो ढंग से करता रहेगा तो वो मेंटेन कर लेगा। फर्स्ट इज distribution between the union and state of the net proceeds of taxes which are to be divided between them and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. इसको आसान तरीके से लिखना क्या है, तरीका क्या होता है, to take care of vertical and horizontal distribution of taxes. यही स्टेटमेंट्स, इसको दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है दैट इज वर्टिकल, अमंग्स द स्टेट्स जो होनी है दैट इज हॉरिजॉन्टल। दोनों के लिए फॉर्मूला आता है अलग अलग। Determination of principles and quantum of grant and aid or grants and aid to the states which are in need of such assessments. Based on what principles you should give aid to the states and how much aid should be given. Aid का मतलब क्या है, you are not expecting anything in return. Measures needed to augment the consolidated fund of a state, to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state, on the basis of recommendations made by the Finance Commission of the state. उन मेजर्स को भी इंटीग्रेट करना होता है अपनी रिपोर्ट में। अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है, हम अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करके नहीं लिख रहे, आर्टिकल 280 का पार्ट एंड पार्सल। Now, despite the changing fiscal environment and considerable expansion in its functions, the institution of Finance Commission has ensured smooth functioning of center-state fiscal relations. If there has been no breakdown in the center-state relation, the credit for this goes to the Finance Commission. So far, maintenance का रोल ठीक ठाक कर रहा है. We have analyzed to an extent. Yeah. हमने assess कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, अभी तक बढ़िया चल रहा है. Okay. If there, then it also goes to the credit of the farmers of the Indian Constitution that the provisions relating to the center-state fiscal relations have stood the test of time. They proved adequate even in meeting the changing environment. The demand to accord permanent status, अब next part में हम जा रहे हैं, हमने assess कर लिया उसका रोल कि हाँ जी बढ़िया काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है अभी तक, फाइनेंस कमीशन की जो डेवोल्यूशन जैसे जैसे आती रहती है उसके हिसाब से काम चल रहा है. Now, the demand to accord permanent status to the Finance Commission seems right on the following grounds. First, there is a need for robust expenditure planning without compromising on fiscal consolidation as fiscal federalism gathers momentum in the era of uniform GST. तो हमें अपनी एक्सपेंडिचर प्लानिंग स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बेटर करने की जरूरत है. और जीएसटी की रेवेन्यू कलेक्शन हर महीने डिफरेंट होती है, आपने देखा किसी महीने 1 करोड़ जो 1000 करोड़ इस तरह से लाख करोड़ इन लेवल्स पे पहुंच जाती है, कई महीनों में नीचे चली जाती है. तो उसके हिसाब से आपकी जो एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स भी है वो भी चेंज होनी जरूरी है. There is a need to ensure consistency between the Finance Commission so that there is some certainty in the flow of funds to the states. That means the State Finance Commission and the Central Finance Commission. See, if there is certainty in the flow of funds, then only you can plan कि मुझे किस infrastructure project में कितने महीने के लिए काम करना है और मैं उसको कितने funds दे सकता हूँ. खास तौर पे ये प्रॉब्लम आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इश्यूज में, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि हमारे पास कितने फाइनेंस पहुंचेंगे, कब पहुंचे, हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है. सेंटर से स्टेट में तो फिर भी कंसिडरेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी है, लेकिन थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस में ये बहुत कम है. During the intervening period, it can also address the issues arising from the implementation of the recommendations of the commission. जैसे कि अभी तो 5 साल के लिए रिकमेंडेशन आ गया, लेकिन अगर परमानेंट बॉडी होगा तो हर 6 महीने में 2 महीने में एक रिपोर्ट तो बना ही सकता है ना कि भाई जो रिकमेंडेशन दी थी वो किस तरह से काम कर रही है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए और आगे के लिए हमें क्या बेहतर करना पड़ेगा. वो ये सारी चीजें ये बता सकते हैं. Every 2 months, every 6 months this can be done and it can be accordingly changed also. This will help add the knowledge and capacity and boost fiscal prudence. Fiscal prudence कहने का मतलब क्या है? That the government receipts and expenditure should be aligned with each other.
The upcoming Finance Commission will be able to get a clear hearing on the challenges and the rate of effectiveness in its likely recommendations. The Commission can function as a leaner entity in the intervening period till the next Finance Commission is set up in a full-fledged manner. तो अगर permanent body हो तो हम उसके कोई अंदर 5 लोग 6 लोग बिठा सकते हैं as a leaner entity. फुल फाइनेंस कमीशन जब फिर ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा काम करना है 5 साल के बाद, तब ज्यादा आ जाए, इस तरह से. अब इसकी कुछ, जब भी किसी चीज के पॉजिटिव डिस्कस करने हैं, चाहे आपको सारा काम पॉजिटिव ही लग रहा हो, एक आधा पॉइंट उसका दूसरी तरफ से भी हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट उसका एक स्ट्रक्चरल सिस्टम देना जरूरी है. तो यहाँ पे मैंने वही दिया. So however, the proposal for making the Finance Commission a permanent body could evolve in 2 ways. First, the government would abdicate the discretion currently available in designing and implementing the specific purpose transfers. Specific purpose transfers मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स दे सकती है, वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन खत्म हो जाती है क्योंकि फाइनेंस कमीशन है, फिर वो फुल टाइम अपने हिसाब से देगा. Second, it would dilute the neutrality of Finance Commission between the union and states through a process of continuous association with the government. अभी तो क्या है ना, फाइनेंस कमीशन 5 साल बाद आता है, फ्रेश लोग आते हैं, उनकी गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस अपना काम करने आए हैं, रिकमेंडेशन देंगे, चले जाएंगे. लेकिन अगर एक परमानेंट बॉडी होगी तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कंटिन्यूस लाइजनिंग के थ्रू काम करेगी. तो जैसे प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम्स आती थी, वही प्रॉब्लम्स फिर हमें फाइनेंस कमीशन में देखने को भी आएंगे. प्लानिंग कमीशन में ये होता था कि it would give discretionary grants through planning commission. Anytime any state government had to implement anything, वो पहले प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल लेके आता था. तो ये सारी चिंताएं अब नहीं है नीति आयोग के अंदर. नीति आयोग में फाइनेंशियल लेवल पे कोई पावर्स नहीं, एलोकेशन की या स्ट्रीमलाइनिंग की. प्लानिंग कमीशन के पास फाइनेंशियल एलोकेशन की पावर थी. अब फाइनेंस कमीशन के पास भी फाइनेंशियल एलोकेशन की पावर है, लेकिन वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है 5 साल बाद में उसकी रिपोर्ट को मानना या ना मानना अलग बात, वो पार्लियामेंट का जिम्मेदारी. Because president will lay this report in the parliament and then they will pass it and then it will be implemented. लेकिन अगर ये परमानेंट बॉडी है तो फिर जैसे प्लानिंग कमीशन में ट्रबल्स आ रहे थे कि सेंट्रल स्टेट के साथ लाइजनिंग से काम कर रहे हैं, वैसे ही फाइनेंस कमीशन में आना शुरू हो जाएंगे. So this is another issue which can happen if we create a permanent body out of this. तो 2 issues भी साथ में हमने साइड कर दिए प्रपोजल के साथ. Then conclusion. Thus, there is a considerable merit in having one apolitical body that provides stability and predictability, primarily to share taxes that ensure fiscal balance. The way forward for fiscal federalism in India, therefore, to refocus the scope of Finance Commission to maintain the trust of all stakeholders in the institution. तो ये अच्छा स्टेप है, ये आगे लिया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा. सो दिस इज फिस्कल फेडरलिज्म. तो 2 लेवल पे हमने फेडरलिज्म को डिस्कस किया. अभी कुछ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर चल रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर. परम, यू हैव एनी क्वेश्चंस? सर जस्ट इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनेंस कमीशन वाला क्वेश्चन था, इसको कैन वी स्टार्ट डायरेक्टली कि गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और क्यों मतलब नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स देके एंड नीचे उसमें बिकॉज पूछा है कि डू यू एग्री, तो आप लिख के दिखाना मेरे को, देन आई कैन गिव यू द इनपुट्स, बिकॉज राइट नाउ जब आप सिर्फ इतना ही बताएंगे तो आई विल नॉट गेट द कंप्लीट पिक्चर, सिंस यू आर आल्सो रिस्पांसिबल टू राइट दीस क्वेश्चंस. ठीक है सर, तो आपने उसके अंदर फिर मेरे को लिख के दिखाओ, देन आई विल सी कि आपने कैसे लिखा है एंड इज इट जस्टिफाइंग द डायरेक्टिव दैट इज इन द आंसर. बी वेरी केयरफुल. देखो एक चीज है, मीन्स में नंबर ना आने का एक बड़ा कारण होता है. क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप वैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो नंबर कटेंगे. As per the directive, if the directive is asking you to analyze, you should analyze. If it is asking you to examine, you should examine. Okay. If it is asking you to evaluate, you should evaluate. Now, by the way, what is evaluate? How is it different from analysis or examination? Next directive, before going into the next thing. Evaluate क्या होता है जी? कौन बताएगा? Let's say I give you a statement. The President of India is a ceremonial head of the state. Evaluate. How will you answer this question?
India has not done very well with respect to poverty elimination. Evaluate. The Constitution of India is a patchwork. Evaluate. Anybody? How do you evaluate anything? Shweta? So this is your president is a ceremonial head, so we can evaluate like constitution के वो articles वगैरह जो हमारे पास proofs जो है उसके according. Will that be evaluation or will that be justification? Yes, मैं वही confused Summarization करना. वो है. So there is evaluate and there is justify. There are two different things. Let me conclude. अब जैसे हम कहते हैं ना कि आर्टिकल्स बता देंगे और उसके बेसिस पे हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ वो एक सेरेमोनियल हेड है, तो दैट इज आइदर यू आर प्रूविंग इट और यू आर जस्टिफाइंग इट. इट्स नॉट इवैल्यूएशन. हाँ जी सोनाली, गो अहेड. Sir, in evaluate we give positive and negative aspects. ये छोड़ दो प्रोज एंड कॉन्स, ये बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट है, ये वहां लगाना जहाँ कुछ समझ नहीं आता. प्रोज एंड कॉन्स बताने का भी मैं बताऊंगा कहाँ पे, जहां पे होगा ना कमेंट, ये भी आपका डायरेक्टिव आता है कमेंट, तो वहां पे यू हैव टू गिव कमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट. ठीक है, तो वहां पे ये यूज करना. प्रोज एंड कॉन्स उससे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आप within the analysis. So evaluate means to what extent it is true. Yes, to what extent it is true, it's functional. That is what it means. हाँ जी जशन. ऐसे तो सर कि थोड़ा एक जजमेंट टाइप में उसका कंक्लूड करना कि एक्चुअली क्या मतलब वो शो कर रहे हैं, उसका जज करना, एक समराइज करना उसको. ओके सर एविडेंस दे के एग्जामिन करना इज इवैल्यूएशन. Cheryl wanted to say something, the mic is on, but then So we'll be. So I was just saying that go on. so we can write about the powers and the functions. Powers and the functions of the president. Okay, And but then does it help in evaluation? So on the basis of the powers and the functions, we can we can take that, we can take the help of that in concluding whatever the state. Now if I help you in this a little bit, let's say I want to evaluate your performance. I am UPSC and I am evaluating your performance as compared to some other student. How do I do that? For that, comparison is essential. I have to compare your marks or your performance in the examination with respect to somebody else's performance in the same examination. Only then I'll be able to evaluate you with respect to somebody else. So in evaluation, what is most important is comparison. Yes. And that comparison has to be on same parameters. So if I am to say President of India is a ceremonial head, now this is to be, if it is to be evaluated, I am to compare President of India with the President of USA. Then I will say he's a functional head, the US President, while Indian President is merely a ceremonial head. Then that is the line of thought that I have to work upon. बात समझ आ गई? Yes, sir. काम ये करना है. Evaluate has to happen through a comparison, and that comparison has to be on equal terms, equal lines, or equal parameters. So I'll say the president of USA has these executive powers. The Indian president has no such discretionary level of executive powers. Whatever powers are there, although he is the head of the executive, he has to exercise it on the basis of aid and advice catered to him by the Prime Minister heading the Council of Ministers. बातें वही हैं, उनको लिखने का तरीका मैटर करेगा कि आप लिखते कैसे. आप भी यही चीजें कह रहे हो कि हम ये आर्टिकल बताएंगे, वो आर्टिकल बताएंगे, फाइन, बट वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को, जैसे मैंने कहा, डायरेक्टिव का काम क्या है, हाउ द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो इन द आंसर.
That is what the directive is all about. So if the directive is evaluate, that's the way it has to be. You have to compare things and then give the answer. If it is simply analyze, now if I say president is the ceremonial head of Indian government, analyze, अब इसमें क्या करेंगे? दिमाग लड़ो ऐसे ही खुलेगा. President is the ceremonial head of the Indian administration or Indian state. Now you need to analyze the statement. You don't need to evaluate the statement. मैंने एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया, बताओ जरा इसमें और इवैल्यूएशन में फर्क क्या होगा? Analysis has to be theoretical. It has to be factual. It has to be dimensional. है ना? So at a theoretical level, first I have to see, as a head of state, this dictum, what it really means. So head of state really means that जो power है, political power है, वो उसके through चल रही है. But in case of president, it is not so. उसकी power आर्टिकल 74 ने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है. ठीक है, ये बताऊंगा. अब डायमेंशनल. सो as far as the judicial powers are concerned, as far as the military powers are concerned, etc., etc., it's pretty much defined, yet it is confined. However, there are certain discretionary powers in which the president has some real power also to exercise. Those are the areas where constitution is silent. जैसे अगर हंग पार्लियामेंट हो तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? क्लियर मेजोरिटी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? उन एरियाज में डेफिनेटली उसके पास कुछ है. जुडिशियल पावर्स में भी टू एन एक्सटेंट उसके पास कुछ करने को है. ठीक है, तो वहां पे कुछ लेवल तक उसकी सेरेमोनियल से ट्रांजिशन होके एक फंक्शनल लेवल पे अथॉरिटी नजर आती है. फिर इन रिटर्निंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस, वहां पे भी उसकी कुछ पावर नजर आती है. सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो में भी कुछ हद तक उसकी फंक्शनल पावर नजर आती है, क्योंकि इन अ मॉडर्न डे डेमोक्रेसी वेयर द मीडिया इज वेरी मच द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, वहां पे अगर प्रेसिडेंट अपना कोई कंसर्न गवर्नमेंट के एंटी दिखाता है तो पता चलता है और गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है एक डेमोक्रेसी के अंदर. जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ रिटर्न कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो उनको जवाब देना पड़ा और उन्होंने वापस नहीं भेजा कि भाई इसको करो ही करो. Article 74 says that the president can return the advice once, but the reconsidered advice has to be passed. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी कुछ लेवल तक फंक्शनल पावर भी आ जाती है. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस हो गया. फैक्चुअल में आप एक आधी एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की बताई. डॉक्ट्रिन ऑफ लेटर ऑफ सपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द हैज टू बी टेस्टेड at the grounds of the Rashtrapati Bhavan before it is tested at Lok Sabha. There also some amount of functional power comes. This is the analysis of Indian president being a ceremonial head. Okay? Evaluate was through his comparison with the US president. Analysis is with respect to कि क्या वो ceremonial है या कभी-कभी वो functional भी हो जाता है. फिर मेरा पूरे का पूरा जो एम्फेसिस है वो किस वर्ड पे चला गया? सेरेमोनियल वर्ड के ऊपर चला गया. जब मैं एवैल्यूएट कर रहा था तो मेरा एम्फेसिस किस वर्ड के ऊपर था? हेड ऑफ द स्टेट. क्या उसमें कुछ पावर है भी या नहीं? क्या उसी के हिसाब से सब चलता है या नहीं? ठीक है, दिमाग चला थोड़ा सा, समझ गए? और सर इसी को क्रिटिकली एनालाइज करना हो प्रेसिडेंट्स के पावर को, तो फिर उसमें क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग देंगे आर्टिकल्स के बेसिस पे. और एग्जामिन में जैसे मैंने 74 आर्टिकल के बारे में बताया, 53 के बारे में बताया. ठीक है, और सर एग्जामिन में एग्जामिन के अंदर अब डिफरेंट हो जाएगा. एग्जामिन में मुझे पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे. लेट्स से if the president is a ceremonial head of the state, what should be the parameters to discuss this? The parameters are, first is how far उसकी पावर रियल डोमेन में आती है. दिस इज वन पैरामीटर. सेकंड, क्या वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है या नहीं पॉलिटी के अंदर. जब मेरे यहाँ पे जो पॉलिटी है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्या प्रेसिडेंट का वो होना भी चाहिए या नहीं. दिस इज द सेकंड और थर्ड पैरामीटर.
तो इस तरह के मुझे 2-3 पैरामीटर बना के फिर बात करनी पड़ेगी, बातें वही हैं। और सर सॉरी टू बार बार मैं पूछ रहा हूँ सर, और इसी को अगर जितना पावर्स पूछोगे ऑफ तुम्हारे दिमाग चल रहा है, अच्छा है सर, और इसी पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करना हो तो फिर हम उसको जस्ट इंट्रोडक्शन बॉडी को स्ट्रक्चर करके और कंक्लूड कर देंगे। डिस्कस इज एन ओपन डायरेक्टिव, उसमें तो आपको शांति है, आप जैसे मर्जी करो। डिस्कस में बस 3 चीजें चाहिए, एक इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन डायमेंशंस में या फ्लो में। आप डायमेंशंस नहीं बनाना चाहते तो कई बार किस चीज के फेजेस बन जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इतने से इतने टाइम, इतने से इतने टाइमलाइन में भी कर लेते हो, एंड देन एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन व्हिच हैज सम फ्यूचर पर्सपेक्टिव आल्सो, दैट इज अ डिस्कशन। ठीक है, सो फार सो गुड, कंफ्यूजिंग तो नहीं है बहुत ज्यादा। एनालाइज, जब भी वर्ड ये आ जाए सामने तो 3 चीजें सोचनी है, थ्योरेटिकल, डायमेंशनल एंड फैक्चुअल। एग्जामिन जब भी आ जाए तो पैरामीटर सोचना है, इवैल्यूएट जब आ जाए तो कंपैरिजन सोचना है। ठीक है, बी वेरी क्लियर, ये लिख के रख लो अपने पास। कभी भी, अब जो बच्चे इंग्लिश में एमए भी कर लेते हैं ना, वो भी इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि पढ़ाते ही नहीं, हमारे करिकुलम के अंदर ये पार्ट ही नहीं है, लेकिन यूज हम हर जगह कर रहे हैं सैडली। ओके, so now going to some current affairs with respect to the concept of federalism जो पिछले 1 साल में हुए हैं। तो मैंने उसका एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था। ये करंट अफेयर्स उन बच्चों के लिए ज्यादा रेलेवेंट हैं जिन्होंने इस साल नीट्स का पेपर दिया, लेकिन क्या दूसरों के लिए इररेलेवेंट है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। यूपीएससी में जो जो इंडिया के इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी, आपको लगता है कि जीएसटी आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद इशू नहीं रहेगा? खुल रहेगा, है ना? या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं स्टेट्स के बीच में, क्या वो इशू नहीं रहेंगे? डेफिनेटली रहेंगे। अब यूपीएससी में उस चीज को वो उठाते कब है, वो इसको क्वेश्चन में कब पूछते हैं, दैट इज समथिंग दैट विल कम विद टाइम। उनको डिस्कस करने दो, आपकी टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ करंट अफेयर के रेफरेंसेस को पता होना चाहिए, व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन दिस टॉपिक टिल डेट, ये उस तरह से। तो फर्स्ट डेवलपमेंट इज, और इसमें से आपने कैरी क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा, कितना कितना चाहिए, क्योंकि सी दिस इज एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज देयर, उसमें से आप किस तरह से कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, दैट आल्सो विल डिस्कस। सो लेट्स गो फॉर दिस। सो फर्स्ट इज फेडरलिज्म, चैलेंजेस टू फेडरलिज्म इन इंडिया और फेडरल इंडिया। तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट है। सो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो हियर ये आपने एज एन एग्जांपल या जब कोट करना होगा तब यूज करना है। सो फेडरल थ्योरिस्ट केसी वेयर है, so he argued that the nature of Indian constitution is quasi-federal in nature. The Supreme Court in Satpal versus State of Punjab and others case held that the Constitution of India is more quasi-federal than federal or unitary. ये जब अपने किसी भी चीज को जस्टिफाई इलैबोरेट कुछ करना पड़ेगा तो वहां पे ये वाले कोर्ट्स या ये वाले केस स्टडीज आंसर राइटिंग में देने होते हैं। ठीक है, देन constitutional provisions regarding federalism. So the list in the 7th schedule, that is the union list, the state list and the concurrent list. इन लिस्ट से एक क्लियर लेजिस्लेटिव मैंडेट सबका पता चलता है कि स्टेट या सेंटर कौन कौन से एरियाज में लॉज बना सकते हैं। आर्टिकल 263 provides for an establishment of interstate council for smooth transition of business or transaction of business between the union and the state and the resolution of disputes. तो हमारे यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल है, वहां पे बैठ के सब बात कर सकते हैं। जोनल काउंसिल्स भी हैं। आर्टिकल 280, so there is a finance commission, वो उसका पूरा वर्कआउट हमने देख लिया। Then also the institutions of local self government were added in the constitution through 73rd and 74th Constitutional Amendment Act to strengthen the grassroots democracy, basically decentralization. Now, what are the institutions for federalism? So the Planning Commission always had space for discussion on issues concerning the federal nature of polity and was sensitive to the different developments requirements of the state. तो अभी प्लानिंग कमीशन की जगह आज हमारे पास क्या है? नीति आयोग. That's also replicating the same spirit. The interstate tribunals, National Development Council, and the informal bodies that have served vehicles of consultation between the union and states and even UTs. So these bodies have been instrumental in tackling difficult issues democratically
through deliberations while upholding cooperative spirit between union and state. आज GST Council भी यही काम करती है, वो भी cooperative federalism को आगे बढ़ाता है. Challenges in maintaining the federal spirit of India. First is ineffective functioning of several bodies. सबसे पहले प्लानिंग कमीशन था, उसने कुछ खास काम नहीं किया, वो भी सेंटर के हिसाब से चलता है. वो डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के अंदर rather, प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग बहुत डिटेल में. Interstate councils have met only once in the last 7 years, while the NDC has not met at all. Then issues in tax regime. The misconceived GST has already taken away much of the autonomy available to the state and made the country's indirect tax regime much more unitary in nature. So this violates the spirit of cooperative federalism again. Then encroachments upon the state's autonomy in state subject. So Article 370 was removed without consulting the state legislature, that is J&K. Parliament legislated on agriculture in state list to enact the 3 contentious farm laws, overstepping its jurisdiction and imposing a law on the states. The new education policy 2020 is again an encroachment on the federal nature of the polity. BSF's jurisdiction was extended in Assam, West Bengal and Punjab without any consultation with the concerned states. 15 किलोमीटर के दायरे से बढ़ा के 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया गया from the border. तो उससे क्या होता है कि jurisdiction बढ़ गई तो उस एरिया में पुलिस नहीं काम करेगी, BSF के रूल्स काम करेंगे. Impact of COVID-19. So due to National Disaster Management Act being in force, so everything was in the working of the center government. उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है. So right now, what do you need to do in terms of reassuring federalism or the spirit of federalism in India? First is recognition of federalism. So it should be underlined that Article 1 of the Constitution declares that India, that is Bharat, shall be a union of states. And that devolution of power is necessary in such a setting. The states की union है, वो कुछ तो states के पास भी होना चाहिए. Then strengthening interstate relationships. So deploying human resources between the state governments to support them in preparing responses to the consultation initiated by the union, especially with the focus on the federalism angle. Instead of reaching out to each other only during the crisis situation, chief ministers may create a forum for regular engagement on these issues. Like zonal councils are there, so through that they can definitely coordinate with each other time to time. 5 zonal councils are हमारे पास. Okay. Bringing reforms while balancing federalism. So a diverse country like India requires a proper balance between pillars of federalism. कौन-कौन से pillars हैं? Autonomy of states, centralization, and regionalization. Extreme political centralization or chaotic political decentralization shall be avoided, as both lead to weakening of Indian federalism. See, federalism prevails well. कभी भी कोई कार अच्छे से कब चलती है जब उसके सारे पार्ट्स एंड पार्सल्स अलग-अलग यूनिट्स अच्छे से चल रहे होते हैं. Suspension, the engine, the gearbox, the body frame, the chassis, everything works together, then the car is working well. If one of those things starts malfunctioning, the entire machinery collapses. Yes or no? Similar is it with the federalism. Similar is it with each and every machine. ठीक है. अब एक डिबेट जो करंट अफेयर्स में रहा इस साल वो था सेंटर वर्सेस यूनियन. वोकैबुलरी कौन सी यूज करें? क्या सेंटर गवर्नमेंट बोलना चाहिए या यूनियन गवर्नमेंट बोलना चाहिए? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक वर्कआउट शुरू किया जिसमें said that it shunned the usage of term central government in its official communication by replacing it with union government, and this led to this debate, center versus union. ये कुछ खास डिबेट था नहीं, बस न्यूज वालों को तो न्यूज मिलनी चाहिए उठाने के लिए. ठीक है. अब इसमें यूज क्या करना चाहिए? Which is a better term? In fact, union is a better term. I'll come directly to the conclusion before mingling too much into what happened. So there is a constitutional expert, Subhash Kashyap. ये वही बंदा है जिसने +1 की NCERT लिखी है. Indian Democracy at Work, है, Indian Constitution at Work. So from the point of usage of the words, center indicates a point in the middle of a circle, whereas union is the whole circle. In India, the relationship between so-called center and states, as per the Constitution, is actually a relationship between the whole and its parts. तो हमें इसलिए union use करना ज़्यादा अच्छा है.
Both the union and the states are created by the constitution. Both derive their respective authority from the constitution. Okay? The one is not subordinate to the other in its own field, and the authority of one is to coordinate with that of the other. कोई भी एक दूसरे के अधीन नहीं है, ठीक है? So इसलिए union अच्छा word है as compared to center. So the judiciary is designed in the constitution to ensure that the Supreme Court, the tallest court in the country, has no superintendence over the High Court. इस तरह से डिजाइन किया गया है, independent भी है. Though Supreme Court has appellate jurisdiction not only over high courts but also over lower courts and tribunals, but they are not declared to be subordinate to it. In fact, high courts have wider powers over the issues such as writ jurisdiction, Article 226. In very common parlance, union government or union gives a sense of federal, while center gives more a sense of unitary government. But practically both are seen in the Indian political system. क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मालूम ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर, ठीक है? तो इस पूरे डिबेट का कंक्लूजन बस इतना ही है. Better word is union, as it is representative of the whole system or the whole circle. Center is not a very representative word. Moreover, it is depicting an authoritative setup where one is superior and the other is subordinate. While union is much more of a coordinate kind of a thing, coordinate authority, not that the other one is subordinate. ये आर्ग्यूमेंट है लाइन इसके अंदर मेन, तो इसके ऊपर फोकस करना है. मेंस में भी यही इशू है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, बी आर अम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या? सो वो एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है सेम चीज को प्रोपेल करने के लिए. तो इसमें से एक चीज जो आप यूज कर सकते हो, another one, that is बी आर अम्बेडकर. So he said the committee had used the word union because क्यों उन्होंने इंडिया, that is भारत shall be a union of state, ऐसा क्यों कहा? That Indian federation is not a result of any agreement between the units, and the components of the unit had no freedom to secede from the federation. क्योंकि उस टाइम पे जब ये वर्ड्स लिखे गए तो कंसर्न कुछ डिफरेंट था. कंसर्न ये था कि एक नेशनल इंटीग्रेशन जरूरी है एज कंपेयर टू एक स्टेट का फ्रीडम या उसका इंडिपेंडेंस. National integration is more important. In that spirit, the word union was used. I hope that is clear so far. Hello. Any doubts? Union versus center? No, sir. Okay. अभी ये सेंटर वर्ड पहले भी यूज नहीं किया गया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया. कॉलोनियल लेगेसी में भी सेंटर एक हैंगओवर है, वहां से चला आ रहा है. ये सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लॉज, ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के टाइम से चले आ रहे हैं. तो इट इज लाइक अ कॉलोनियल हैंगओवर. ओके. देन कॉन्फ्लिक्ट विद द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. You should not say center, you should say union, because union is more depictive of coordinate authorities and center is more depictive of subordinate authorities. बस इतनी सी बात. Next is special category status. इंडिया में ना क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस वजह से कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना शुरू किया गया और उसके बेसिस पे उनको ज्यादा ग्रांट्स मिलनी शुरू हुई ताकि वो अपनी डेवलपमेंट एट पार ला सकें विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स. तो इसके बेसिस पे ये शुरू किया गया था. पर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना शुरू कर दिया. तो इफ एवरीवन हैज स्पेशल कैटेगरी, देन इट इज नो लॉन्गर अ कैटेगरी. Just like if everyone is reserved, then there is nobody general, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए. तो अभी क्या है ना कि क्योंकि इतने स्टेट्स को हम दे चुके थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसलिए इसके ऊपर अब फुल स्टॉप लगाया है कि भाई अब और किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिलेगा. That is something that has happened. So recently, Union Finance Minister made it clear that center will not consider demands for special category status for any state. As the 14th Finance Commission has clearly said that no special status can be given. अब तो 15th चल रहा है, 14th में ये चीज रिजॉल्व हो गई. This comes out as a blow to states like Odisha, Bihar, and Andhra Pradesh, which have been pushing for it for the years now. ये तीन states deserving है, ऐसा नहीं है कि deserving नहीं है, but
इनको ये नहीं मिला। अभी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, किनको मिलता है, पहले कंडीशंस देख लेते हैं। So parameters for a special category states are based upon Gadgil formula, that is hilly terrain, low population density, and sizable share of tribal population. दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। Strategic location along the borders with neighboring countries, economic and infrastructure backwardness, non-viable nature of state finances. ये 5 चीजें होनी चाहिए, ये 5 पैरामीटर्स हैं। अब इनका वर्कआउट कैसे चल रहा है? So SCS is a classification given by center to assist development of states that face geographical or socioeconomic disadvantages. So Constitution does not make any provisions for SCS. Constitution में कहीं नहीं लिखा. This started with the recommendations of the 5th Finance Commission in 1969. इनके लिए special provision finances के level पे की जाए. सबसे पहले ये status किसको दिया गया? J&K, Assam and Nagaland. 1969 में status मिला. So for plan assistance was granted in the past by National Development Council of the erstwhile Planning Commission. तो SCS के लिए अलग से पैसा आना शुरू हुआ। अभी हमारे पास 11 स्टेट्स हैं जिनके पास ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। So there is a list. Okay. So they have this status. Telangana is the newest one जिसको ये स्टेटस दिया गया, उसके बाद ये बंद करें। Okay. The 14th Finance Commission has done away with this special category status, except for Northeast and 3 hill states. तो अभी presently ये 12 states तक limited है, उसके आगे किसी को नहीं मिलेगा. It suggested to fill the resource gap of such states through tax devolution by increasing it to 42% from 32%. उन्होंने कहा कि upfront ही पैसे ज्यादा दे दो, पहले 32% devolution होता था, सारे states को 10% एक्स्ट्रा दे दो allocation. उसे अपने आप ही एक्स्ट्रा देने की, अलग से कोई SCS कैटेगरी में देने की जरूरत नहीं है. In general ही ग्रांट ज्यादा मिल जाएगी. So SCS is different from special status, which imparts enhanced legislative and political rights, while SCS deals with only economic and financial aspects. Special status सिर्फ एक स्टेट के पास था, आर्टिकल 370 के अंदर J&K, जो कि अब रिपील हो गया. रिपील नहीं हुआ मतलब डेड आर्टिकल बन गया. ठीक है. Now benefits क्या है? अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो आप सेंटर पेज 90% ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. देखिए, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की. एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 100% फंडिंग इज बाय सेंटर. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में शेयरिंग होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ये शेयरिंग 50-50 भी हो सकता है, ये शेयरिंग 60-40 भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है. इट कैन बी 70-30, इट कैन बी व्हाटएवर. आमतौर पे 90:10 इज द शेयरिंग इन दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में यही एक मेजर डिक्टम है जो यूज होता है. ठीक है. देन बाकी स्टेट्स में जैसे भी शेयरिंग करेंगे वो डिपेंड करता है, स्कीम टू स्कीम वेरी कर सकता है. अनस्पेंट मनी इन फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड इज कैरीड फॉरवर्ड. आमतौर पे किसी भी स्कीम का अनस्पेंट अगर मनी होगा तो लैप्स कर जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे वापस चले जाते हैं. लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर वो पैसा वहीं पड़ा रहता है, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं. सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दीज स्टेट्स इन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. तो इन सब चीजों के लिए ये कंसेशंस ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब बद्दी में हिमाचल के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई. उसका कारण क्या है कि वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत ज्यादा छूट दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है. पंजाब में और हरियाणा में ये नहीं हो पाया. ठीक है. 30% of the central's gross budget goes to special category states. In terms of support, most support is made available to these states. Okay. Now, what are the concerns regarding these special category states? So, it causes an increased burden on central finances. Obviously, अगर 30% budget इनको जा रहा है तो burden तो है ही, और tax भी नहीं ले रहे इनसे. Also, giving special status to the states leads to demands from other states too. भाई हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, हम भी गरीब हैं. सो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार, इनमें से बिहार का तो अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखें या ट्राइबल के लेवल पे देखें तो कंसर्न ठीक जायज भी है टू एन एक्सटेंट, बट दिया नहीं गया कभी भी.
तो कारण क्या है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं आ पाया। बिहार में बीजेपी और कांग्रेस में से एक की प्रॉपर से सरकार नहीं बनी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी ये सब की सरकारें बनती रही हैं। तो उस वजह से वो अलायंस पार्टनर तो रहे लेकिन सेंट्रलाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर के साथ नहीं जुड़ पाए। तो शायद अगर ऐसा होता तो बिहार को ही मिल जाता। ठीक है, so that's the situation. Right now, as per 15 Finance Commission, the devolution is 40%, 41%. J&K क्योंकि अब यूटी हो गया तो उसका 1% उन्होंने कम कर दिया, बोला अब तो ये सेंटर ही खर्च करेगा यहाँ। तो ये है फिलहाल की सिचुएशन। नेक्स्ट इज सेंटर्स पुश फॉर लेबर कोड्स। अब ये एक पर्टिकुलर इशू है जो इकोनॉमी में आपका ज्यादा कंसर्न है। जीएस पेपर 2 में इसको पूछने के चांस थोड़े कम है, जीएस पेपर 3 में ज्यादा पूछ सकते, बट ये दोनों जगह है क्योंकि जीएस पेपर 2 में भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का एक एस्पेक्ट दे रखा है और जीएस पेपर 3 में भी दे रखा है, तो ये कहीं भी पूछ सकते हैं। अब क्योंकि ये भी एक सेंटर स्टेट का मुद्दा है, फेडरल मुद्दा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको रखा। लेट्स सी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, रिप्लेसिंग 29 सेट्स ऑफ लेबर लॉज। हम क्या करना चाहते हैं बेसिकली, लेबर को रेगुलेट करने के लिए पहले तो इंडिया में बहुत देर तक कोई लॉ बना नहीं, जब बनना शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 लॉज बन गए और स्टेट गवर्नमेंट के 200-250 लॉज हैं, हर स्टेट के अपने अपने लॉज। तो हम ये चाहते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ लॉज होमोजीनियसली सारी कंट्री में लागू हों जो कि लेबर को रेगुलेट करे, बजाय इसके कि स्टेट टू स्टेट उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। एंड दिस इज गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। होमोजेनिटी ऑफ लॉज इज एसेंशियल क्योंकि लेबर माइग्रेट भी तो करता है स्टेट टू स्टेट। So labor codes include 4 versions. First is Code of Wages Act, then Industrial Relations Code, then Social Security Code, and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. तो 4 लेवल्स पे काम करता है। नाम से काफी हद तक क्लियर है। कोड ऑफ वेजेस में हमें एक मिनिमम वेजेस सेट कर लेने, ठीक है। सो यहाँ पे कंसर्न क्या है, इट विल रेगुलेट दी wages and bonus payments in all employment areas where any industry, trade, business, manufacturing is being carried out. ये कौन से लॉज को रिप्लेस करेगा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये प्रीलिम्स का मामला होता है, ठीक है। ओके, तो कंसर्न इसमें क्या है, राइट टू सस्टेनेंस, कि आपके पास एटलीस्ट इतनी वेजेस तो हों कि आप अपने आप को आराम से सस्टेन कर पाए, ठीक है। देन it has been ensured in the bill that employees getting monthly salary shall get the salary by 7th of the next month. डेट भी फिक्स करनी जरूरी है क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो कुछ भी हो रहा है, सैलरी किसी भी तरीके पे आ रही है, तो वो फिक्स करना जरूरी है। जिस दिन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो एटलीस्ट एक चीज तो फिक्स हो ही जाएगी कि 7th of every month सैलरी विल कम। The central government is empowered to fix the floor wages by taking into account the living standards of the workers. It may issue different floor wages for different geographical areas. So based on geographical area, floor wages होंगे, minimum wage. कम से कम कितनी तनख्वाह देना पड़ेगा। Let's say if somebody is working in Mumbai, उनके expenditure अलग है as compared to somebody working in some remote village in Punjab. तो उनके occupation के हिसाब से और उनके geographical area के हिसाब से उनके expenses होने चाहिए। Then industrial relations code. So basically industrial relations क्या है, labor and management, then management and client, and then management and government. ये 3 level पे ये relationships काम करते हैं, ठीक है। So what we want to do is clearly define the conditions of employment and rules of conduct for workmen by way of standing orders, service rules, and to make them known to the workmen employed. So here it is more concerned with the management and labor. The new provisions for standing order will be applicable for every industrial establishment wherein 300 or more than 300 workers are employed. तो ऐसा नहीं है सब पे लग जाएगा, 300 लोग होंगे तब अप्लाई होगा, तो एक ये रूल्स बनाए गए। Moreover, it also introduces new conditions for carrying out a legal strike. अभी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से स्ट्राइक जो है वो इलीगल है, सिंपल, क्योंकि वो कहते हैं कि इट कॉजेस मोर हार्म देन गुड, स्पेशली इन गवर्नमेंट areas. But here in private areas, we are having something called legal strike also. उसका भी option लेके आ रहे हैं to just ventilate the resentment of labor against the management. The time period for arbitration proceeding has been included
in the condition for workers before going on a legal strike as against only the time for conciliation at present. तो अभी सिर्फ ये है कि आपको लेबर को मनाने का मौका दिया जाता है, कंसिलिएशन, अगर ना हो पाए तो आप स्ट्राइक पे जाइए. अब कंसिलिएशन प्लस आर्बिट्रेशन भी है. आर्बिट्रेशन कहने का मतलब आप किसी ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं. यू कैन हैव अ थर्ड पार्टी हु कैन हेल्प यू मीडिएट योर रिजॉल्व. So no person employed in any industrial establishment shall go on strike without a 60-day notice and during the pendency of proceeding before a tribunal or national industrial tribunal or 60 days after the conclusion of such proceedings. So उसमें भी उन्होंने laws लिख दिया कि कैसे होगा. So at present, a person employed in public utility services cannot go on strike illegal. कहीं भी government में आप काम कर रहे हो, unless they give the notice for a strike within 6 weeks before going on strike or within 14 days of giving such notice, which the IR code, that is the Industrial Relation Code, now proposes to apply for all industrial establishments. तो notice देके ही strike पे जा सकते हो, ऐसे नहीं कि बस कल से हम नहीं आ रहे types. Social Security Code bill. So here we are trying to ensure that some kind of social security is also available to the unorganized workers in India. In fact, if you look at the workforce in India, 10% of the workforce today, पहले तो हम 8% बोलते थे, लेकिन अब 10% बोलते हैं. 10% of the workforce today is formal organized. 90% is informal unorganized. So these fellows who are in the unorganized gig workers or platform workers, gig worker बोलते हैं जिसको थोड़ा काम इधर से मिल गया वो कर लिया, फिर कहीं और काम मिल गया थोड़ा सा वो कर लिया, like this. तो इनको भी to an extent social security provide करने की consideration है. So aggregators employing gig workers will have to contribute 1 to 2% of their annual turnover for social security, with the total contribution not exceeding 5% of the amount payable by the aggregator to the gig or platform workers. And occupational safety, health and working conditions. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमेशा एक बात की जा रही थी कि इंडिया में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है. तो in that respect ये एक particular aspect आता है. So here it has defined the interstate migrant worker as the workers who have come on their own from one state and obtained employment in another state earning up to rupees 18,000 a month. इससे ज्यादा है तो फिर उसको migrant worker नहीं बोलते. The proposed definition makes a distinction from the present definition of only contractual employment. तो अभी ये जो money workout दिया गया ये पहले नहीं होता था. It has dropped the earlier provision of temporary accommodation of workers near the work sites, जैसे वो टीन शेड बना के रहते हैं, and has proposed a journey allowance and a lump sum amount of fare to be paid by the employer for to and fro journey of the worker to their native place. So it's essentially it has recognized who is exactly a migrant worker. तो उसके लिए ज्यादा concern occupational safety. तो इनके benefits क्या होंगे? Essentially कभी भी नए laws आते हैं तो उनके benefits हम ये कहते हैं कि रिफॉर्म के एंगल से हैं, कंसोलिडेशन के एंगल से हैं, लेबर के एंगल से, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा आपको इस तरह के बेनिफिट्स. फर्स्ट इज दिस कोड ऑफ वेज एक्ट 2019. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस लिटिगेशन एज इट स्ट्रीमलाइंस द डेफिनेशन ऑफ वेजेस कि मिनिमम वेजेस क्या होंगे, उसको ये स्ट्रीमलाइन करता है. वन, देन कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज. तो पहले 25 central laws were there, now they will be replaced by 3 codes. So this will provide a big boost to industry because उनके compliance burden कम होता है. जब भी laws को rationalize और simplify करते हैं, so the compliance burden decreases. So industry के लिए it's a positive push. Okay. Then single licensing mechanism. So the codes provide for a single licensing mechanism. So industry में आपको अलग-अलग licenses नहीं लेने पड़ेंगे for different kinds of labor that you are deputing for different kinds of work. Then easier dispute resolution. So because पहले अलग-अलग laws हैं, सबके अंदर अलग-अलग dispute resolution mechanism. अब 4 laws हैं तो सबके एक तरह से dispute resolution mechanism चलेगा. तो आपको भी जो आपकी legal team है उनको भी बहुत सारी चीजों पे काम नहीं करना पड़ेगा. Ease of doing business, obviously. So when you have simplification of laws, ease of doing business is a natural byproduct.
As far as labor is concerned, so they will have a fixed term employment, reduce influence of trade unions, and expand the social security net of informal sector workers. Gender parity, so man and women, equal pay for equal work, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी एक एस्पेक्ट है, उसको भी ये प्रमोट करता है. And then what are the challenges labor codes are facing right now? So there is a constitutional challenge. Why? Because labor is a concurrent subject. तो सेंटर उसके ऊपर लॉ तो बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, और यही सिचुएशन अभी चल रही है. तो अभी जो ये जो कोड्स हैं, इनको सेंटर को इम्प्लीमेंट जब कर देगा तो यही प्रिवेल भी करेंगे, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के अंदर वर्कआउट यही है कि अगर दोनों लॉज बनाते हैं तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. बट अभी इसको इम्प्लीमेंट करना भी तो अपने आप में कंसर्न है. पहले सारे स्टेट्स इसको कंप्लाई करें. द प्रोसेस हैज टू बी कंप्लीटेड. तो उसमें कई ममता बनर्जी टाइप चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, ही होबे ना ही चोलबे ना. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल, so it will water down the labor rights for workers in small establishments having less than 300 workers. अभी क्या है ना कि 100 वर्कर्स से अबव ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन नए के अंदर 300 वर्कर से ऊपर होगा, तो मतलब साइजेबल वर्कफोर्स है अगर, तभी आप इसको लगाएंगे. So that will also help in increasing the workforce within small industries. Code of Wage Act. So it has been alleged that the new wage code will push for starvation wages further by increasing the income capacity and purchasing power of the informal worker. तो ये भी पॉजिटिव है कि उनकी वेजेस बढ़ेंगी. Concern of exclusion. So draft rule mandate the registration of all workers with Aadhaar cards on the Shram Suvidha portal to be able to receive any form of social security benefit. This would lead to Aadhaar-driven exclusion, and workers will most likely be unable to register on their own due to lack of information. ये एक कंसर्न है कि भाई अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इंक्लूड नहीं होंगे. मोreover, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने अपने आप को श्रम सुविधा पोर्टल पर रजिस्टर कराना है, तब भी आप एक्सक्लूड होंगे इसमें से. आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो सोशल सिक्योरिटी के इन कोड्स में मिलते हैं. अर्बन सेंट्रिक. So the codes fail to extend any form of social protection to the vast majority of informal sector workers. For example, those who have worked from home or those who are in agricultural sector, farm labor. No right-based framework. So the code does not emphasize on social security as a right, nor does it make any reference to its provisions as stipulated by the Constitution. Right to work is still a distant dream in India, and these codes don't talk about it either. So what do you do going forward? First, you need to take care of the migrant workforce. Then skilling is always an answer. तो इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स जब तक नहीं बढ़ती तब तक कुछ नहीं होना. अभी स्किल्ड वर्कफोर्स की हमारे पास जो प्रेजेंट डे कंसर्न है वो सिर्फ 8-10% हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है. चाइना के अंदर ऑन दी अदर हैंड 80% स्किल्ड वर्कफोर्स है. इस वजह से इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो चाइना में ज्यादा अच्छा हो रही है. Rising invisible labor. The national policy for domestic workers need to be brought in at the earliest to recognize their rights and promote better working conditions. जो आपके घर में काम करने आते हैं वो तो किसी लेबर की गिनती में ही नहीं आ रहे है, तो वो भी लेबर. That is the invisible labor. Other measures. So a very robust, reliable, and fairly decent social security package needs to be created for workers in the unorganized sectors as well. So this is with respect to the labor codes. It is a topic which is relevant in GS paper 2 and 3 both, and can be an essay topic in this year's examination because labor reforms एक dead area रहा है बहुत देर तक. इस पे 2020 से वर्कआउट तो कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक कहीं पहुंचा नहीं. So it's an area of debate also. इकोनॉमी में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे. नेक्स्ट इज स्पेशल रिपोर्ट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब ये एक रिपोर्ट राज्यसभा टीवी के द्वारा क्रिएट किया गया, तो उसमें पूरा एक एपिसोड था, उसमें से एक्सट्रैक्ट्स हैं. ठीक है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the structure and defines and determines the role and function of every organ of the state and establishes the norm of their interrelationship and checks and balances. And in that nature, we got the executive, legislature, and judiciary as separate entities. Now, what are the objectives of Indian Constitution? Very clear. They are given. You just go for a reading. ये वही है जो आपने बेसिक्स में पढ़ रखा है. नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लो एक बार. NCERT लेवल का है. What is the history of separation of powers? यहाँ पे है. The concept of separation of power was first seen in the works of Aristotle in the 4th century BC
where he described the three agencies of the government as General Assembly, public officials, and judiciary. General Assembly लॉ मेकिंग है, पब्लिक ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी. इस तरह से उन्होंने सोचा इसके बाद. In the ancient Roman Republic, a similar concept was followed by the term res politica, or separation of power, was coined by Charles Louis II at 18th century French social and political philosopher. So his publication, The Spirit of Laws, is considered one of the greatest works in the history of political theory and jurisprudence. His ideas had a profound impact on the architects of the American Constitution as well. Under his model, the political authority of the state is divided into legislature, executive, and judiciary. He asserted that to most effectively promote liberty, these powers should be separated and operate independently. ये concerns हैं. तो ये थोड़ा सा historic reference जो है ये means answer writing में बहुत काम आता है. Aristotle या चार्ल्स लुई II, तो दोनों में से किसी का भी एक नाम लेके वहां पे आप इस पे वर्कआउट कर सकते हो. Now, why separation of power is important? क्यों करना है? Why federalism also? अगर ऐसे भी सोचोगे तो power concentrations को address करना है, transparency ensure करना है, elimination of other administrations like monarchy, and natural justice. So it is as per the principles of natural justice, fairness, that you should have a balance in various parts in terms of powers. Now, what are the issues with respect to separation of power in India, especially? First is weakened opposition in India. India में opposition के level पे कुछ खास तौर पे exist कर नहीं रहा since 2014. तो इस वजह से we need to have good opposition party in the center also. Okay. Then judiciary being averse to checks and balances. The Supreme Court has held that the 99th Constitutional Amendment Act, which provided for the establishment of NJAC as ultra vires. NJAC, if you remember, National Judicial Appointments Commission. अभी judiciary है जो वो अपनी appointments खुद कर रहा है. Constitutionally executive के through होनी चाहिए, resident के through होनी चाहिए, लेकिन वो खुद कर रहा है. आपको इसके भी ऊपर आएंगे जब judiciary को डिस्कस करेंगे. तो उसको उन्होंने अल्ट्रा वायर्स वर्कआउट कर दिया और तब से लेके आज तक जुडिशरी थोड़ा सा पंगा कम लेगा एग्जीक्यूटिव के साथ. जुडिशरी कब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के साथ पंगा लेगा? जब वो वीक होगा तब. 1964 तक, जब तक नेहरू जिंदा थे, जुडिशरी की कभी हिम्मत नहीं हुई एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जाने की, क्योंकि एज अ स्टेचर नेहरू एंड द अदर पॉलिटिकल लीडर्स सिटिंग इन द पार्लियामेंट हैड मच लार्जर स्टेचर एज कंपेयर्ड टू जुडिशरी. But whenever the parliament is weak, and that is the point when judiciary seems to take over. The केशव नंद भारती केस 1973 में आया. उस टाइम पे पार्लियामेंट वीक था. इंदिरा गांधी की अभी पोजीशन ठीक से असर्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया के बहुत बेकार थे. इंडो पाकिस्तान वार तो जीत लिया 1971 में, लेकिन 1973 आते आते गल्फ क्राइसिस ये वो चलते इंडिया में बहुत इश्यूज चल रहे थे with respect to economy. So because of that, judiciary was able to strike at that point and create something called a basic structure doctrine. तुम सब कुछ अमेंड कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर हम तय करेंगे क्या होता है, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते. अभी पार्लियामेंट फिर से स्ट्रॉन्ग, इस टाइम पे भी वो उतने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट के अगेंस्ट. जुडिशियल एक्टिविज्म. See, there are two things. One is judicial activism, other is overreach. Activism is when the legislature and executive are not able to come up to the mark or have created some kind of a vacuum, then judiciary will actively try to fill in that gap of governance so as to deliver good governance. That is a positive approach and it should be respected. But overreach is completely negative. Therein, it will try to interfere in the working of legislature and executive and showing its constitutional supremacy or position of power with respect to interpretation of constitution. It will try to subordinate the institutions of legislature and executive. That is judicial overreach. And this is something that should be criticized. So as far as judicial activism is concerned, अच्छा है, but यह होना चाहिए. Overreach नहीं होना चाहिए. ठीक है. Next is executive excess. तो इंडिया में कई बार क्या होता है कि अब जो एग्जीक्यूटिव है, दैट मींस द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव,
और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। आमतौर पे जब एक्सेस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो अगर ये लोकसभा में इनके नंबर्स अच्छे हैं, राज्यसभा में इनके नंबर्स अच्छे हैं और कोई इनको बीट करने वाला नहीं है, तो कई बार ये ऐसी लॉज लेके आते हैं जो लोगों के या डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट के या फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी आते हैं। ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। So this disturbs the overall federal nature of the polity as well. Okay. Now, what are the constitutional provisions in this regard? तो वो हम पहले देख चुके हैं कहाँ पे separation of power को लेके वर्कआउट है। Okay. अब beyond this कुछ डिमांड्स हैं फॉर स्टेटहुड, ये भी फेडरलिज्म के टॉपिक के अंदर आती हैं। So there is a demand by Puducherry for statehood. It's already a UT with the legislature, and we want the Pondicherry wants to become a separate state. So let's see. So demand of statehood is a long pending issue of Puducherry, making it unable to exercise any power for creating employment potential by inviting more industries to Puducherry and also creating infrastructure facilities for tourism. UT का जो सारा लेजिस्लेचर है, जो सारा वर्किंग है, वो कुछ सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकता। So UT refers to those federal territories that are too small to be independent and are too different to be merged with the surrounding state, or are financially weak or are politically unstable. ऐसे केसेस में हम UTs बनाते हैं। Now, due to these reasons, they could not survive as a separate administrative unit and needed to be administered by the union government. तो उनकी सारी की सारी administration center से होती है। Now, UTs are administered by the president. Whenever it is said president, that means prime minister heading the council of ministers. क्यों? क्योंकि ये इनके advice के बिना कुछ करते नहीं। So in UTs, the lieutenant governors are appointed by the president of India. So whenever it is president of India, you know what to understand. Okay. However, Puducherry, J&K, and Delhi are exceptions in this regard, as they have an elected legislature and government due to the status of partial statehood. इन तीनों के अंदर separate legislature भी है, elected legislature भी है. At present, India has 8 union territories, as you know. Now, background क्या है? UTs का formation कैसे किया गया? So 1949 में इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था, A, B, C, D. इसको फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद चेंज किया गया और हमारे पास स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 2 सेगमेंट बने। अब उस यूनियन टेरिटरी का जब कंसेप्चुअलाइजेशन लाया गया था वो इसी बेसिस पे था जो आपने ऊपर पढ़ा, व्हाई देयर हैज टू बी अ यूटी एंड कैन नॉट सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। नाउ व्हाई पुडुचेरी इज डिमांडिंग एज अ सेपरेट स्टेटहुड, उसके रीजंस फॉर डिमांड क्या है, ये एक सेपरेट एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आ सकता है मींस के अंदर इस साल के लिए। So linguistic and cultural reasons हैं, they are the primary basis for creating new states in the country. जो फजल अली कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का आया था उसमें एक रीजन ये लाया गया था। अदर फैक्टर्स क्या है? कंपटीशन फॉर लोकल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सर्टेन रीजन्स, improper allocation of resources, difference in culture, language and religion, economy's failure to create enough employment opportunities within Puducherry, then popular mobilization and democratic political process is also one of the reasons. Sons of soil sentiment. Sons of soil sentiment क्या है? जो यहाँ के वसनीक है वही यहाँ की गवर्नेंस का भी पार्ट एंड पार्सल, वही यहाँ पे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी। नाउ व्हाट आर द इश्यूज? अगर हम ऐसे बनाते जाएंगे तो क्या होगा इससे? तो डिफरेंट स्टेटहुड में लीड टू hegemony of the dominant community, caste or tribe over the power structure. मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? अगर एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और दूसरा माइनॉरिटी में है, तो ये मेजॉरिटी वाले ही सब कुछ करेंगे, अपना रूल चलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वोट पॉलिटिक्स होगा और वोट बैंक के अंदर मेजॉरिटी विल विन एंड दे विल बी द रूलिंग पावर स्ट्रक्चर. दिस कैन लीड टू इमर्जेंस ऑफ इंट्रा रीजनल राइवलरीज, जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। असम में जैसे कि जो पहाड़ी लोग हैं और जो पहाड़ों के नीचे जमीन पे रहते हैं मैदानी लोग हैं, दोनों में लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स मे आल्सो लीड टू certain negative political consequences, like a small group of legislatures could make or break government at will. जैसे गोवा है, अभी गोवा में तो फिर भी बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे से सब गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत कम लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज है,
तो उसके बेसिस पे 15-20 लोग इधर से उधर हुए नहीं तो सारी गवर्नमेंट टूट गई या बन गई, और इतने लोगों को आपस में कनाइव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन इंटरस्टेट वाटर एंड पावर एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ये हमेशा चलेंगे, जैसे जैसे नए स्टेट्स बनेंगे तो जो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स हैं वो हमेशा कहेंगे भाई हमें और चाहिए पानी। The division of states would require huge funds for building new capitals and maintaining a larger number of administrators, as was the case in division of Andhra Pradesh and Telangana. ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये कभी भी नए स्टेट्स बनाएंगे तो वहां पे ये यूज हो सकता है। इसको लेके क्वेश्चन आता रहता है यूपीएससी में कि भाई न्यू स्टेट्स अगर बनाएंगे तो उसको लेके क्या इश्यूज या चैलेंजेस हैं। वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, हर जगह यही लिखना है, चाहे वो पुडुचेरी है, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे कहीं पे भी। And creation of smaller states only transfers power from old state capital, that may be let's say Andhra Pradesh Telangana में अभी क्या हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में से तेलंगाना में चला गया, to a new state capital without empowering the already existing institutions like gram panchayat, district collector and so on. तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक स्टेट टू स्टेट सेकंड टियर ऑफ गवर्नेंस में ही नया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट वर्क की बजाय एक नया पावर स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर देते हैं। Constitutional provisions. So Indian Constitution empowers the Union government to create new states out of existing ones. Article 2 और 3 इसके लिए empower करते हैं उनको, तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। Now पुडुचेरी का कुछ बेसिक्स है कि किस किस को मिला के कैसे बनाया गया। तो 1962 में 4 फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज को मिला के पुडुचेरी बनाया गया, दैट इज पौंडीचेरी, कराईकल, यानम and Mahe. These were the 4 that were combined to create it. And it originated as a French trade center in 1674. उस टाइम पे लोकल रूलर से फ्रेंच ने इसको खरीद लिया था। So since then it is working like this. Next is demand for Dravida Nadu. ये पुरानी एक डिमांड आइडियोलॉजी के बेसिस पे है, that is Tamil Nadu for Tamils. So Periyar is a very famous figure in India's modern history. P.V. Ramaswamy Periyar. Periyar is also a river. Okay. So Dravida Nadu is the original idea floated by Periyar. Now he gave a slogan, Tamil Nadu for Tamils, in 1938 in response to a plan to introduce compulsory learning of Hindi across India. See, Tamil is a language which is loved like anything by the Tamilians. They even name their children after the language. So from that perspective, Hindi is something which is considered very foreign in Tamil Nadu. Okay. So initially the demand for Dravida Nadu proponents was limited to Tamil speaking regions, but later it was expanded to include Indian states within Dravidian language speakers in majority, such as Andhra, Telangana, Kerala and Karnataka. Other names of the proposed sovereign state include South India, Deccan Federation और दक्षिणापथ। तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन ये है कि जितनी भी द्राविडियन लैंग्वेजेस है इनका एक स्टेट बना दो, द्राविड़ नाडु, ताकि हिंदी स्पीकिंग डोमिनेशन यहाँ पे ना हो। ये सब डिबेट वहीं से चल रहा है जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का डिबेट। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेके बहुत सारी कमिटीज बन चुकी हैं। पहली कमेटी जो बनी वो एस.के. धार कमेटी था, उन्होंने बोला कि इसको नहीं किया जा सकता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, दे क्रिएटेड अ सेकंड कमेटी, इट्स कॉल्ड जेवीपी कमेटी। इन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते रीऑर्गेनाइज। फिर तीसरा कमेटी बना फजल अली कमीशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑल्सो। फजल अली के टाइम पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि उनसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट कर दिया गया था इन 1953। दिस कमीशन कम्स इन 1956। क्यों किया गया? क्योंकि इतनी ज्यादा हालात खराब हो गए लॉ एंड ऑर्डर के आफ्टर वन ऑफ द फेमस लीडर्स पोट्टी श्रीरामुलु, he committed fast unto death just asking for a state Andhra to be created on linguistic basis. Once that was created, फिर इस डिमांड को कहीं ना कहीं तो एग्रीगेट करना ही था, तो फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि ठीक है इसको कर देते। That happened. So that is Dravida Nadu. You don't need to go into too much of the background. I am not expecting a specific question, but I've just given is add an extra information here. कि द्राविड़ा नाडु की अभी भी ये इस तरह से एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेपरेट फैक्टर का है कंसर्न
कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि हिंदी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन तमिल रीजन्स इवन टुडे. Political factors are there, so they always want a representative language. So that's more important. Anybody wants to ask something? Sir, isn't it a secessionist movement, sir, Dravida Nadu wala? See, no, they don't want to separate or create any other entity outside that of India. ऐसा नहीं है. What they want to do is want to preserve their own culture within the very fabric of the country. So it is not a secessionist movement. It is very much of a cultural movement. ठीक है. नॉर्थ इंडिया में कल्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना हम उसको अबव एवरीथिंग एल्स नहीं रखते. साउथ इंडिया में इट इज केप्ट अबव एवरीथिंग एल्स. इज लाइक दिस. ठीक है. Then there are also economic factors. So inadequate benefits in comparison to their contribution with respect to Indian economy. साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा GST ये सब आता है. फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे में है, फिर भी उनको उतना नहीं मिलता. सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल. Then demographic factors are there. So population is one of the determining factors for finance commission's devolution. और 70s में जब फैमिली प्लानिंग ड्राइव चला तो साउथ इंडिया ने बहुत अच्छे से उसको चलाया, लेकिन नॉर्थ इंडिया ने नहीं चलाया. तो 70s के बाद जितने भी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कोई भी डेवोल्यूशन होता है, चाहे पॉलिटिकल पावर चाहे फाइनेंस, उसमें वो पिछड़ जाते हैं. तो ऐसे में भी उनके लिए एक वैलिड रीजन है ये सब कहने के पीछे. डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस हैज लेड टू origination of sub-nationalism, and southern states like Tamil Nadu feared substantial seat share in Parliament of India that urged this separatist kind of a tendency कि हमारा अलग से द्राविड़ नाडु बना के दो, like this. ठीक है. So this is as far that we can go today, and we will be continuing with this particular document tomorrow, and you are advised to go through this at once जिन लोगों ने इस साल मेंस देना है. और कल को हम सिटीजनशिप के ऊपर काम करेंगे. सिटीजनशिप का जो एरियाज हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी हैं, along with rest of the chapters. So we'll continue. आज के लिए इतना ही. इतना डाइजेस्ट कर लो, बहुत है. ठीक है. So thank you and take care. If you have any doubts, please do ask. क्वेश्चंस जो लिखने हैं वो वही लिख